पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग जो खेली जानी है 16 to 31 दिसंबर, सबको उसका इंतजार है। टेप बॉल क्रिकेट तो इन बच्चियों ने भी बहुत ज्यादा खेली हुई है। जब मैंने इनसे पूछा, वैसे मैं और पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, टेप बॉल क्रिकेट तो खेली है ना? कोर्स खेली है, बिल्कुल। और अभी भी खेलती हैं? जी बिल्कुल, हर स्पोर्ट्स फील्ड में खेलती हूँ। तो पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग आ रही है, तैयार हैं देखने के लिए? आ रही हैं इंशाल्लाह, जरूर। हाँ बेटा, कैसा टेप बॉल क्रिकेट तो खेली होगी? जी जी, सबने खेली है। we're very excited for TPTL and we're hoping to be there इंशाल्लाह। और जो खास तौर पे दिल चाहता है कि आपकी भी कोई लीग होनी चाहिए ना, जो जियो पे टेलीवाइज हो, बच्चियों की टेप बॉल की। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, इंशाल्लाह होगी भी एक दिन। और PTPL आ रहे हैं देखने के लिए? ऑफ कोर्स, सारा खानदान लेकर आएंगे हम। ये सब लोग यहाँ पे तैयार हुए। जनाब, आप PTPL देखने को तैयार हो? जी बिल्कुल। पाकिस्तान टेप बॉल, मतलब टेप बॉल का बहुत शौक है पाकिस्तान में, और एक बहुत एक्साइटिंग लीग है। बहुत एक्साइटेड है, इंशाल्लाह देखेंगे। सब देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। कासिम शेख इधर आइए ना, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर। ये बच्चियाँ सब तैयार हैं आने के लिए और खेलने के लिए। डेफिनेटली नसीम भाई, बहुत एक्साइटिंग टाइम है। और मैंने सबको कहा था कि आपने अपनी सारी फैमिलीज, पप्पू, मामू, आंटियाँ, अंकल, सबको ग्राउंड में पहुंचना है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में आपको मिलेगा पाकिस्तानी टेप बॉल प्रीमियर लीग फ्रॉम December 14 टिल द 31st of December। पाकिस्तानी टेप बॉल प्रीमियर लीग 18 दिन सीधा जाएगा जियो लाइव, जियो स्पोर्ट्स लाइव। PTPL, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच बेटा। Hi there, Qasim Sheikh here from BTV, currently making my way around the PIMEC exhibition, and I have another product to show you. Alongside me, I have Miss Ikra from Rawa Farms, and I'm going to say Assalamu alaikum to her. How are you? Walaikum assalam, I'm good. Ikra, I've heard a lot about your product. Today, I would like you to tell me the backstory and a little bit about your product, please. Sure. So basically, shrimp farming is very new in Pakistan. Shrimp farming is new to Pakistan because shrimp farming has been tried in Pakistan for around 20 years back. But due to the lack of supply chain and due to the lack of native local supply of seed, it was not prospering. So Rawa Farms were the first company who introduced hatchery in Pakistan. We were the first to introduce shrimp hatchery in Pakistan. That's why we deducted the cost of seed, and also the mortality rate is very low in the locally produced seed. So we are the first ever hatchery in Pakistan, shrimp hatchery in Pakistan. We are producing around 10 million shrimp seeds per year, and we are supplying over Pakistan. And the biggest benefit of shrimp farming is that we are utilizing all the useless saline lands in shrimp farming. Wow, sounds impressive. Ikra, day 2 of PIMEC exhibition, Badar Expo Solutions organised, partnership with Pakistan Navy. How are you finding it so far? It's very impressive. It's very good. A lot of industries are getting collaboration through it. We have a lot of meetings since yesterday. So it's a very good initiative, and it should be carry on. And will you be coming then back in future then? Sure, definitely I'll be there. Thank you very much, Ms. Ikra. I wish you all the best with Rawa Farms. Thank you very much.
अस्सलाम वालेकुम। एक्सपो सेंटर कराची से नसीम राजपूत पाईमेक पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 के शो के साथ आपसे मुखातिब है। पाईमेक हमारे मुल्क का इंतहाई अहम इवेंट के जिसका ये सेकंड सीज़न है और शानदार अंदाज से तरक्की करता हुआ दिखाई दिया जब हमने देखा कि 44 से ज़्यादा ममालिक के स्टॉल्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा 165 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स ने यहाँ पर आके हिस्सा लिया। बिज़नेस के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से एक नया संग मील जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, पाकिस्तान नेवी और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन साथ खड़े हुए दिखाई दिए। लेकिन जितने शानदार अंदाज से इस इवेंट को मुनक्किद किया गया वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे ताकि हमारी सारी दुनिया से जो लोग आ रहे हैं उनको एक ज़बरदस्त पैगाम जाए, एक ऐसा पैगाम जाए कि उन्होंने किसी एक बड़े इवेंट में आके पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान नेवी और जो लोग भी शानदार अंदाज से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। क्या कुछ हुआ इस इवेंट में, आइए आपको दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम अल्लाह का शुक्र है हम आइडियाज़ में हर साल आते हैं। पाईमेक में हमारा फर्स्ट टाइम था। There are many commodities which can be exported, which can be imported. So this is perhaps the first step which will pave the way for larger cooperation and coordination between both the countries. कुछ स्टार प्रोजेक्ट्स जो हम लेकर आए हैं इधर पाईमेक के ऊपर, जिसको मकामी तौर पर भी और बैन अवी तौर पर भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। पाकिस्तान नेवी की 4 डायमेंशंस को यहाँ पे शो किया गया है कि पाकिस्तान नेवी सी पर, अंडर द वाटर, देन ऑन द लैंड एंड इन एयर हम ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, एक ही मकसद इस वक्त सारी दुनिया का दिखाई देता है, एक अच्छा पॉजिटिव पैगाम, मईशत को बेहतर बनाना। और इस सिलसिले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दिया। आपने देखा होगा एक्सपो सेंटर कराची में हर जगह आपको ब्लू दिखाई दे रहा है क्योंकि असल चीज़ है ब्लू इकॉनमी, जिसको हमने दरियाफ्त करना है। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, पाकिस्तान नेवी और उनके साथ बदर एक्सपो सॉल्यूशन साथ साथ खड़े हुए दिखाई दिए। सबका एक ही मकसद था, सबका एक ही मोटिव था, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। क्या कुछ बिज़नेस हुआ, क्या कुछ हमारे मुल्क को हासिल हुआ, इसकी डिटेल तो आपको आती रहेगी। लेकिन पाईमेक आज ख़त्म हो गया, इसकी तैयारियां जारी थी। 3rd एडिशन में एक मरतबा फिर नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपके साथ मौजूद होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं कि जब दोबारा हम मिलेंगे तो इंशाअल्लाह पाईमेक जो ऑलरेडी 44 मुल्क है, 144 मुल्क यहाँ पे खड़े होंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हर जानिब लग रहा होगा। अल्लाह ने के बाद।
पैमेक 2025। मैं इस वक्त सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टॉल पर मौजूद हूँ। तो चलिए हम इनके ऑनर से बात करते हैं, इन इस स्टॉल की डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे आप अपने स्टॉल की डिटेल्स दे दो। जी मैं बिल्कुल, मेरा नाम है सरवत जुल्फ़कार। हमारी है सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रेडी किए हैं, जिसके हवाले से हमारी डिटेल जो है वो हमारी बिस्मा बताएंगी। हमारी स्टूडेंट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माई सेल्फ बिस्मा आसिफ एंड आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली हमारे एक प्रोजेक्ट था फ्लड और जितनी भी चीज़ों को देखता है वो इंसान, मतलब आपके पास एक चीज़ें ऐसी हो जाएगी जो कि ना मोस्टली बहुत से फ्लड्स आते हैं ड्यू टू रेनिंग या फिर कोई सैलाब आ गया, तो उस हवाले से हमने एक मॉडल तैयार किया है जो कि आपको कोई रेजिस्टेंस देगा, और इन केस अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन आगे से मिलती है कि कुछ आ रहा है, कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, तो वो आपको टेक ओवर कर देगा बहुत ही आराम से। फर्दर मोर हमारे पास सोल प्योर है एंड देन वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपके स्टॉल में जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी डिटेल्स दे दें। जी सबसे पहले तो आई एम रज़ा सिद्दीकी फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और मैंने एक स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक तैयार किया है जो कि अगर आप कहीं पे अपने दरवाजे पे लगाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी पे, आपके घर है, व्हीकल है, कहीं पे भी आप लगा लेते हैं, तो सिंपली हमको इस तरह लगा के प्रेस कर लेना है तो ये लॉक हो जाएगा। फिर कोई भी बंदा आगे से खोलने की कोशिश करेगा तो ये बीप करेगा। फिर सेकंड अटैम्प्ट कोई बंदा करता है तो इसी तरह कोई काटने की कोशिश करेगा, खोलने की कोशिश करेगा, तो सिंपली कोई बंदा इस तरह मारेगा तो ये इस तरह बजने लगेगा। इसमें नई चीज़ हम ये लेके आ रहे हैं कि ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन से भी कनेक्ट होगा, और जब भी कोई बंदा खोलने की कोशिश करेगा, आप घर पे नहीं है, तो ये नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे भी आएगी, पॉपअप आएगा कि भाई आपका दरवाज़ा कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, आपका व्हीकल कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपका एसेट प्रोटेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने ये पैमेक के अंदर अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है, तो आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत सारे लोगों को शोकेस करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट को, और मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने प्रोजेक्ट शोकेस करने का और अपॉर्चुनिटी हासिल करने का। चक्कों की बरसात करनी होगी। यंग टैलेंट है, उनके लिए आज बड़ी फ़ख्र की बात है, क्योंकि ऐसी शख्सियत यहाँ पर आई है जिसने टेनिस बॉल क्रिकेट को बहुत बड़ा फ़रोग दिया है। ये सब तंबाकू सुपर लीग जिसका एडिशन नंबर ये 11 है। ये जो आपकी लीग है वो बहुत ही ज़बरदस्त लीग दिखाई दे रही है। अगर डॉट बॉल होती है तो सुपर ओवर होने के चांस है, और अगर रन बन जाता है तो आमिर स्पोर्ट्स चैंपियन बन जाएगी। बॉलर आए, फुल टॉस बॉल, और चैंपियन बनी है, चैंपियन बन गई है। बाकी ऑनर्स जितने भी उनकी 4 साल हो गए, हमने पहले KTPL किया, उसके बाद इंशाल्लाह 16 to 31 हम लोग पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग करने जा रहे हैं। विनर टीम आमिर स्पोर्ट्स को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए आज का ये सीज़न 11 अपने नाम किया। सेकंड टीम जो हारी है वो मेरी नज़र में हारी नहीं है, वो भी जीती हुई है। जो यहाँ तक आई हुई है वो भी, इसको हम नहीं कहेंगे कि वो हारी हुई, आप भी जीते हुए हो। हमारे यहाँ पे जितनी आवाम यहाँ पे आई है, जहाँ इस इलाके के सारे लोग, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया। और जो हमारी टीम आज यहाँ पे जीती है आमिर स्पोर्ट्स, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बड़ा अच्छा मैच रहा। जिस तरीके से मैंने KTPL को स्टार्ट किया, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग को, उसमें पूरे पाकिस्तान से मैंने उन सारे लड़कों को मेरिट पे लिया। इस टेप बॉल को मैंने पाकिस्तान के अंदर भी रजिस्टर्ड करा दिया, और मैंने UK के अंदर भी इसको रजिस्टर्ड करा दिया। इंशाल्लाह हम इसको अपना नेशनल स्पोर्ट्स दुनिया के अंदर दिखा देंगे कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी का खेल है। अभी जो PTPL का गेम होने जा रहा है, तो मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन की है, और इंशाल्लाह 2-3 सीजन जो है हम इंशाल्लाह साल के अंदर लेके आएंगे। और PTPL नया नाज़िमाबाद में 16 तारीख से 16 दिसंबर से इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। तो सारे लोगों को मैं इनवाइट भी करूंगा, सब मेरे मेहमान होंगे इंशाल्लाह, उस ग्राउंड के अंदर आए और हमने अपने स्पोर्ट्स को इंशाल्लाह वहाँ पे इसको उठाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, कासिम शेख here with BTV। अभी मेरे साथ मौजूद है CEO of Osaka Lighting सर शमीम आमिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सर? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हूँ, जान के और खुश हूँ। शमीम भाई, ओसाका के बारे में थोड़ा सा, ओसाका लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ओसाका लाइटिंग इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटिंग कंपनी है। चाहे पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, बड़ा इदारा, पार्लियामेंट हाउस हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, बड़े बड़े बैंक्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे होटल्स हो, हमारे 5 स्टार 6 स्टार होटल, सब अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की लाइटिंग की मसनूआत से रोशन हो रहे हैं। और ये हमारा अज़म है कि पाकिस्तान के जो अंधेरे हैं हमने वहाँ उजाला करना है, हमने उनको रोशन करना है। और बदर एक्सपो से हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना ताल्लुक़ है। इनका कोई भी इवेंट होता है, चाहे आइडियाज़ हो, चाहे ये इवेंट हो, और जो ये इवेंट होते रहते हैं, हम उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक छत के नीचे सब लोग आते हैं, यहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, बड़े बड़े यूज़र्स आते हैं सारे, तो हम इनके साथ बिल्कुल एज़ ए फैमिली की तरह जो है ना शिरकत कर रहे हैं। और हमें इससे बहुत इस्तिफ़ादा हासिल होता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे दुनिया में जो है ना नाम जाता है। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ओसाका इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है लाइटिंग में, और इंशाल्लाह नंबर 1 ही रहेगा। अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी प्राइस की वजह से, अपनी मसनूआत की वजह से हर जगह ओसाका अल्हम्दुलिल्लाह रोशन कर रहा है पाकिस्तान को। शमीम भाई, बहुत शुक्रिया, वंडरफुल आपके साथ बात करने, बहुत अच्छा लगा है। आपको बेस्ट विशेस। बाकी 2.5 डेज, अभी तो डे 1 ही चल रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक। और आप गाला डिनर में होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। ठीक है, वही मुलाकात होगा फिर। थैंक यू। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब, बशरे गुमराह कम कोशिश भी है। नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। इल्म में भी सुरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। It's 2 p.m. At Badar Expo Solutions, we are committed to connecting people, creating values, and delivering impactful events. Our mission is to make emerging healthcare trends and innovations accessible globally, while fostering meaningful B2B matchmaking opportunities between local and international stakeholders. हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर हमने शुरू की, इस साल इसका 2nd एडिशन है। अगेन इसे एक बहुत बड़ी मैं सक्सेस समझता हूँ कि पहले सेशन के बाद हम दूसरे एडिशन के ऊपर आए। Your vision and dedication in promoting Pakistan healthcare industry through such high-level platform is really commendable. Let me start by congratulating Mr. Zuhair from Badar Expos and the spirit behind Abid Abbas Sheikh Saab for arranging such a beautiful conference. ये सिर्फ एक नुमाइश या एग्जीबिशन नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सफ़र है जिसकी बुनियाद
डाली जा रही है और हेल्थ केयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको समझने की और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो मैं ज़ुहैर नसीर साहब आपको और आपकी टीम को बदर सॉल्यूशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। Assalamu alaikum ji. I'm really grateful to the organizers for having this very important session on patient safety. Something which is very close to the heart of everyone who is concerned with medicine, deals with medicine, either in the form of a professional doctor, a medical professionalist, or regulatory bodies like DRAP, or those who are in the process of making medicines like from the pharmaceutical country. So, very important factor which involves all of us equally. So, patient safety is one thing that we feel, and I personally feel, is not given that much significance and importance in our country as it has been given to anywhere else in the world. So, at times, I myself being a practicing surgeon, I know when I was working at the JPMC Jinnah Hospital, or later on I'm working in the private sector now, that patient safety does not come as one thing that we should be taking care of as the first step. And that is what we want our new generation of doctors who are coming up, that they should be aware of that. So a panel which represents almost everyone from physician, Aftab Sahab, from surgeons, to those who are in regulatory bodies, from PharmU, and those also who are from the hospital side, like Nashwa is from the South City Hospital. So let's start. I'll start you, sir, Aftab Sahab. What structure and cognitive factors most commonly contribute to the diagnostic errors that we make? And there are a number of diagnostic errors we all know. And how can healthcare team, not an individual, proactively mitigate them? What do you think? What do you think how it could be done? I think the first thing to do would be to define diagnostic error for the sake of the public. And diagnostic error means when you cannot make the right diagnosis, or you miss the right diagnosis, or even if a diagnosis is delayed, that is also called a diagnostic error. And if even the diagnosis is correctly made, is made in time, and is not communicated to the patient in time, even that is a diagnostic error. So in US, about 12 million diagnostic errors took place 2 years ago in 1 year. And they were responsible for a number of deaths. Diagnostic errors, they come under the ambit of medical errors. And the medical errors were first highlighted in a report of Institute of Medicine, which was published in 1999. So, I personally believe that these occur because we do not do what Sir William Osler asked the modern day physician to do. And he was a professor at University of Pennsylvania in 1905, beginning of the last century. And he said, listen to your patient. He is telling you the diagnosis.
So unfortunately, we are more focused on clinical decision support systems and artificial intelligence, whereas in many prospective studies we know that the correct diagnosis can be made in about 75% cases on history alone, 6 to 7% on examination, and 13-14% on investigations. So if we employ the right history, spend quality time with the patient, examine, and become a thinking doctor. One important thing is, as we become senior, we stop at times to think and do things reflexly, and that contributes to diagnostic errors. Once the diagnosis is incorrect, then it erodes the trust. It jeopardizes the outcome of the patient. It causes extra burden on the cost. Medical errors, sir, are responsible for an additional cost on healthcare of $50 billion per year. So this is all preventable if we start with the right history, spend time with the patient, and if we have systems in place. Unfortunately, when we are overburdened with patients, we do not have systems. So first is the cognitive problem, that the physician herself or himself is at fault. Then are the systems. अब वो हमें कहते हैं कि जी EMR, electronic medical record होना चाहिए. आप बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं माशाल्लाह, and you have headed so many institutions, and now you are at the helm of the policy making in the province of Sindh, and with the status of a minister. So you should know that these doctors, EMR requires time. If you go to US and UK, a doctor is supposed to see only a maximum number of 10 to 12 patients in one day, because it takes 30 minutes to register the patient on EMR. तो एक तरफ expectation है कि EMR हो, दूसरी तरफ number of patients ज़्यादा है. फिर हम जब मांगते हैं as a physician sir, we ask for a data entry operator, तो वो कहते हैं नहीं ये आपने खुद करना है. तो बड़ी ही एक dilemma है. फिर दो चीजें और हैं, with the permission of the chair, I would like to highlight जो diagnostic error में significantly contribute करती है. एक है health disparities, और आपसे ज़्यादा कौन aware होगा कि जब मरीज आता है हॉस्पिटल में, तो वो लोग जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है केयर की, they end up receiving the least care. I will highlight few examples. People who inject drugs, doctors, most of them look down upon them. ऐसे जैसे वो कोई जुर्म करके आ रहा है, वो तो बेचारा ड्रग एडिक्ट अपनी मर्जी से नहीं हुआ है, वो तो आपकी शफकत और मोहब्बत चाह रहा है. People who are left unattended, people who are poor and marginalized, people who are mentally challenged, people who are old and who have multi-morbidity, ये सारों को ज्यादा जरूरत है, और प्रिजनर्स, लेकिन इनको कम मिलता है. तो एक ये भी वजह है डायग्नोस्टिक एरर्स की और मेडिकल एरर की. और सर एक और वजह है, वो है ये सिस्टम कोई इंसेंटिवाइज नहीं करता. या कोई अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, वो सबके लिए बराबर है. Dr. Naveed, continuing with what Aftab sir ने बताया in a very, very nice, elaborative way, what errors are. Don't you think, as he has said, that right now we are emphasizing more on the diagnostic tools rather than applying our knowledge of medicine in the form of history taking, examination, which our professors used to emphasize a lot. And they were of the view that, as he has very correctly said, that majority of the diagnoses are made on that. Today, हम या हमारे साथ जो लोग हैं, because of the availability of CT scan, MRI, so many things, the first thing we do when the patient comes is, for example, a headache, MRI करा के आते हैं. Now taking an easy way out to diagnose, because we have got so much rush, we don't want to
examine him properly for that. आप क्या समझते हैं? Does it contributing to diagnostic error, and how can it be overcome? Sir, thank you very much for giving me a chance to collaborate myself on such an important topic. So you are very right, sir. Said a very important sentence in the beginning that listen to the patient. He is telling you the diagnosis. So I personally feel that one factor is the patient's workload, because a doctor has to see a lot of patients in 3 to 4 hours, and the patient expects that the doctor should not only listen to him or her, he should also examine her and him and then prescribe the relevant investigation. But I personally feel, sir, keeping in view all these limitations, they are there, but one link is definitely missing, and that is we do not touch our patient. That sense of touch, like we talk of the sense of touch between the mom and the baby, exactly the same relation exists between the patient and the doctor. This link is missing, and how we can re-establish this link, I don't know, because the patient to doctor number is too much. But I personally believe that this factor should be addressed seriously, and this should not only develop the patient-doctor, strengthen the patient-doctor relation, but it also decrease the workload on our investigations. Like, number one, the patient expects a doctor sahab ko test nahi likha, so doctor writes the whole battery of the investigation, including chemistry and radiology and everything. But if we start doing that, and if we start developing the rapport with the patient in terms of detailed history and clinical examination, and then full explanation to the patient, because once the patient leaves the office of the clinician, he's I don't know, मुझे तो नहीं पता डॉक्टर साहब ने कि मुझे क्या मसला है. So we should properly explain the patient, and it would definitely decrease the workload on our investigation to better investigation. As sir mentioned, I was reading a few days back, because it would also jeopardize the number of patients. It would also jeopardize the patient safety as well, which is our prime topic today. And recently I was reading an article in which it was mentioned that the number of deaths in USA, because USA and UK, they are the icons for us. We read the books written by their doctors, and it counts around 2 lakh a year because of the breach in the patient safety chain. And number two example of UK, the NHS budget rose almost to 40% in the last 1 to 2 years. So I personally believe, sir, highlighting the very true topic of this age, the number of patients is the main cause that our diagnostic battery of investigation rate is rising, and we are missing the link between the patient and doctor, because we cannot explain to him, we cannot examine to him. Samad sahab, ये बताएं कि because you are in digital, which is the latest thing like AI and other things the companies, do you have any solution for the problem that has been raised for overcoming these diagnostic errors? Do you have that? Not only relying upon the diagnostic tool, because once the tool goes wrong, the whole management will go wrong. So, do you think that the recent trends that you are just talking about, bringing up together, can they be of any support in overcoming this decision making of a diagnostic tool not to go wrong? Assalamu alaikum. Thank you so much, sir. First of all, we at Digitrends currently working on the AI solutions which we think can make a difference in patient safety. I will give you for example which I think is relevant, how AI and IT can make a big impact on patient safety. First of all, we are going to integrate it with our EMR solution. So currently in the conventional EMR, if doctor enter the wrong medicine, or if any medicine which is not suitable for the patient, he has the allergies or some kind of histories, doctor cannot go through all the EMR details every time, and he can enter wrongly some medicine which may affect the health of the patient. Our AI system can be integrated with the EMR, and it can, in the real time, stop the doctor that do not enter that kind of medication that can be harmful for the patient. This is the one example, and there are many other features which
can be very helpful when AI will be integrated into the current AMR solution. The second example would be we are currently working on the world first FDA approved wearable ECG device. So currently what is happening when the device is taking the ECG of the patient, it is transmitting the data to the mobile application, and that mobile application submitting that data to the doctor, who is actually manually reading the ECG, and then he is diagnosing and prescribing the medication over his whatever he sees over his diagnosis. Now, if we integrate AI into that in between, where doctor is currently diagnosing or checking the ECG, the AI system can do this automatically, and he can suggest, the AI can suggest either the patient needs immediate attention of the doctor, so it can send the ambulance, or through telemedicine, doctor can connect to the patient directly. So if we will integrate AI agents into this hardware monitoring system, healthcare hardware monitoring system with the patient and doctor, that AI can do the job of the doctor, the initial job of the doctor. So it can be make great impact as well. The third thing is that differential diagnosis tool. We are partnered with the leading differential diagnosis tools such as Visual DX. So we integrated that visual diagnosis. We launched that differential diagnosis tool here in Pakistan, and we saw a very good adaptation on AI on that tool. If you take a picture of your skin region, the AI image recognition system can recognize either it's psoriasis or eczema through the thousands of images which is already stored in the database of the AI. And doctor who maybe he cannot diagnose that this is the early stage of psoriasis, AI can detect it in a very early stage. So these are the 3-4 examples which I think, and this is already happening in the world. AI has been integrated. The question is, we are not only trying to implement and integrate these solutions currently within this Pakistan market and in Saudi and in Dubai. We are also taking care how the AI governance and how AI compliances can be a part of it. So it can be implemented. Again, it's related to patient safety also. So I think AI will make a great impact, inshallah. Thank you. Dr. Mema, my question to you, because you're also associated with the pharmaceutical, what prescribing safeguards are there for effective avoiding any prescribing liquidity or anything that can be a wrong prescription because you're associated with the pharmaceutical? What safeguard the pharmaceutical has done to them? For example, I can give you a number of medicines with a similar name, similar appearance. In cases of an emergency, sometimes the does pick up the wrong one, and it may be illegal for the patient. So, what are the safeguards that the pharmaceuticals taking in order to avoid these prescribing? All right. Thank you so much. My name is Umema. Thank you for inviting. I'm representing a pharmaceutical company here, but I also hold a position for a primary healthcare setup here in Karachi. So I have kind of an ambit or a cap of both, say from a pharmaceutical perspective and from the hospital end as well. And there have been a lot of solutions that आपने AI की बात करी, and there are a lot of integrations. And same goes when it comes to patient safety, and we talk about what systems can be implemented in pharmaceutical companies. But before I can actually talk about what should be done, I'll be talking about a patient safety culture. And there is a small presentation, if you may all allow me to give a small presentation of the magnitude of patient safety which we are talking about, especially here in Pakistan. So, sir, if you may allow, I'll just give a brief presentation. It's hardly of 10, 11 slides. So we can just discuss that now. We can give us a brief description about that. I'm sorry? We are running short of time, so... Okay. All right. So I'll just make it very precise. See, for me, when it comes to ADR or pharmacovigilance, or we talk about reporting system, the first thing which has to come is to start reporting. We do not hold here a culture of reporting. DRAP already has established systems,
in which healthcare providers and the people who are in the pharmaceutical companies are encouraged to report any ADR which is reported. And I'm talking about the drug reporting errors. I'm not talking about the medical errors, jaise Dr. Saab ne initially kaha ki that also comes under the ambit of medical error. But unless and until we do not know what is being reported and what are the root causes of it, how are we going to actually establish systems in our areas to counter that? And I'm sorry, I was not able to listen to your specific questions regarding pharmacovigilance. Regarding the drug use, for example, recently, DRAP has withdrawn a syrup because it was causing a lot of complications. Many medicines are withdrawn. So what pharmaceutical industry is taking care of avoiding those errors to take place when you are manufacturing a medicine? What are the protocols that you follow? Are there any protocols? Yes, definitely. See, pharmaceutical companies, especially in Pakistan, I would consider this is the most regulated industry in Pakistan, and it has federal regulations applying to it as well as the provincial ones. So there are systems established. Say, for example, I'd give an example of LASA, which is called as the lookalike enzyme rely, which is the major one of the major causes of wrong administration or wrong prescribing. And there is a whole system established by pharmaceutical companies, especially the MNCs as well as the local pharmaceutical companies. They have established systems in which they do have protocols, and especially with the integration of AI into such systems, we are able to check that. And similarly goes with the names. But unfortunately, I would refer to the recent cases of Avastin, as we all are well aware. The case of ceftriaxone, we already know that. But these were malpractices of administration rather than something which was falling under the pharmaceutical category. So the indications are, of course, devised. Thank you very much. Nashwa, you are related to a hospital, a major hospital in the city. So what do you think in a hospital? We all know there are so many cases reported. So many errors take place. We wait time life-threatening to the patient. Patients have lost life. So do you think what are the major protocols that could be applied, or what are the systems that need to be in place in order to avoid all that what is unfortunately happening if patients are being mistreated or being misdiagnosed or whatever you say, which is harmful to the patient whenever they come to the hospital? Any protocols or systems that you think are there, or you would suggest them to be applied? Ji, Assalamualaikum. Thank you, sir, for having us. Thank you for having us. So I work very closely with a lot of workflows with different kinds of healthcare providers, be them physicians or nurses. Now, in terms of reducing harm, there are different components to how you can reduce harm based on who the provider is. जैसे हमने आज की discussion में देखा है, the physician's perspective or the surgeon's perspective is very unique and different. They have different goals for the patient, be it their assessment, their diagnostics, the treatment plan. That is a vision which is dedicated to the physician. Where safety falls in, where measures fall in, where systems fall in to reduce harm in that pathway is separate. That is something that is addressed separately, that has different patterns, different safety measures. If we're talking about surgery, for example, something which may seem like a very simple process, but starting from when the moment the patient arrives in your clinic, what is being communicated, what is being documented, what is going on the record, what does the patient understand from everything the surgeon is saying? And in the event of a harm happening, was that harm pre-warned, pre-informed to the patient? Was it uninformed to the patient? What are accountability measures in place for the surgeon or for the providers? So, surgeons, for example, nursing is a completely different game. Nursing ka role is absolutely separate. They are more involved with the hands-on care of the patient in a time which is vaster than it is for the physician. How to reduce patient falls, how to prevent the patient from getting harm from regular activities while they're in the hospital setting, during mobilization, during eating.
to prevent aspiration, for example, to prevent medication errors. What is the process of the medication cycle? उसके हमने कौन से metrics, accountability tools रखे हैं to make sure medication is being given safely? Also, being a physician, there are a number of times we are prescribing a medicine. A patient has got a problem. He says, for example, full factor deficiency, yeah, I've got epilepsy. And when we are prescribing a medicine for that, not for that, for other reasons, we at times do not know whether this medicine will be harmful to that or is contraindicated to that. So at times we miss because no doctor can have knowledge about every disease and what medicines are contraindicated. Do you think the use of e-prescription could be effective in that, or still the use of our own intelligence in that will be more effective? I think, sir, you have rightly pointed out electronic medical record or e-prescription can help reduce it, magar it cannot eliminate it. Healthcare industry is supposed to be an industry which is far less regulated than many other industries like flying industry. People who are flying jets and airlines, they are far more meticulous in their approach, whereas the number of people suffering at the hands of medical error is far more. In USA alone, medical errors have become the third leading cause of death. Of them, there are 250,000 every year. Half of them are preventable. And sir, 250,000 makes it about 680 per day. That is like 1.5 jumbo jet going down every day. And look at the time, look at the method, look at the money that is being spent on airline safety compared to healthcare safety in our profession. So something we are doing is absolutely wrong, and it requires a paradigm shift. So what do you suggest? Like, as we have very correctly said, there are a number of prescribing errors that we are making. Even the most serious ones make an error in prescription, and they miss on the history of the patient because EMR is very good, it's a new thing. But practically speaking, as we have been working in a government sector hospital, the prescription when you write a government sector hospital and an OPD with 300 patients standing and you have to pass within 3-4 hours, it's not possible to go for an EMR for each one of them. Either it should be a limited number of patients that you are seeing, but you are seeing an uncounted number of patients. उस कंडीशन के अंदर what do you suggest, what protocol or what safety measures could be undertaken कि आप either it should be at the end of the prescribing doctor or the pharmacy which is issuing should take care of that when the pharmaceutical after prescription जाए that this drug should not be given to this patient or the dosage is not correct. What do you think? How could it be counteracted? I think, sir, you have highlighted the issue in your own question that it cannot be anyone working in isolation. What we are doing right now is working in silos. Physician working as a physician, pharmacist working there. EMR, I don't think is going to be the solution in Pakistan. There are two things. I am an old school. I believe that if you spend quality time with the patient, that not only builds trust, it also ensures patient safety and it also ensures quality care to the patient. But at the same time, we have to think differently. The money cannot go to the armed forces of Pakistan and our patients deprived of their due rights. ये कहाँ पर होता है कि 1% GDP से भी कम हम एजुकेशन और 1% से कम हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं. This thing will have to change if you want to change or contribute. अमेरिका में वो कहते हैं कि हम 2,50,000 लोग हमारे मरते हैं हर साल और वो कहते हैं कि 3 मिलियन लोग मरते हैं दुनिया में हर साल. पाकिस्तान में तो रिपोर्ट ही नहीं होती. इंडिया में 54
million medical errors take place every year, which is among us. तो हमारे तो वो फिगर्स ही नहीं है. So we have to bring in more money, we have to bring in more resources. और वो पाकिस्तान के कहाँ से आएंगे? डेट सर्विसिंग से आएंगे, आर्म फोर्सेस से लेंगे. ये अभी बात हो रही थी सर कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे पैसा नहीं लगाते और इंडस को 10 बिलियन दे दिया. भाई इंडस को 10 नहीं 20 चाहिए, मगर ये नहीं है कि वो ये समझते हैं कि इंडस से लेके नहीं लगाया जा सकता. इंडस को पहले ही ज्यादा चाहिए, आपको मजीद पैसा चाहिए और उसको लाना पड़ेगा in order to improve the health. और EMR is not the solution, sir. So what we conclude is that though these gadgets are very good, the EMR or the digitalization, but it is not this case. You can have a blanket thing from the US coming to Pakistan and make it. We have to cut it according to our own needs and our own requirements and our own problems that we have. सबसे बड़ा इशू ये कि you don't have that much of resources available. जैसे कि रोबोटिक के बाद सिंध में एक बड़ा हंगामा हुआ 2000 whether to buy a robot or not to buy a robot, costing billions of rupees. Whether that should be spent on a robot to be bought or that should be spent on primary health care. Because tertiary health care is given more emphasis upon in every part of Pakistan rather than the primary health care. जबकि दुनिया भर में मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर ज़्यादा करें ताकि आपको पेशेंट ही ना है. क्लीन वाटर नहीं है आपके पास, इम्यूनाइजेशन की कमी है, दे ऑल बेटर. मैं नवीद साहब आपसे पूछूंगा, being a surgeon, sir, we make a lot of errors. I am a surgeon myself, sir. What checklist, team communication strategies, or data tools you will suggest that can avoid those errors that we make during our surgery? Sir, so this is a very important topic, and I think this is all we being clinicians are meant for. The patient safety first. And these all checklists, they are meant for this purpose. There are many checklists, sir. First is a WHO checklist, and the second is the SURPASS checklist. Surgical patients safety factors. But sir, I personally believe before we go to the fancy checklist, we need to educate our healthcare providers. And actually, sir, we start with the top-down approach: consultants, and then senior residents, and then junior residents, and actually. The main stakeholders, in my opinion, they are the nursing staff. You may agree or not that most of the time spent with the patient is by the nursing staff. So checklists are there, sir. Definitely, like WHO checklist. WHO checklist, sir, is basically is meant for mainly in the operating room, before induction and before NCM and before the patient leaves the operating room. It mainly encompasses all that horizon while the patient is inside the operating room. Actually, sir, the safety starts right from the clinic of the clinician. When the patient visits the clinic of the clinician, the safety measures need to be adapted. In the case of preoperative care and then followed by intraoperative and then postoperative care. And the whole scenario is encompassed by the one term that is called these days as perioperative care. So in my opinion, in preoperative care, we should emphasize on detailed history. Actually, sir, I would conclude in one line: go back to the basics. Actually, sir, we have left the basics, and we have done like sir said, like electronic medical records and like EMS system and EMR system, everything. It looks very fancy. It fantasizes someone. We are like advancing in every field, but we have no money with us. So we will have to go back to the basics. We will need to take the detailed history and examine the patient and then assess the comorbids and do a detailed and good pre-anesthesia assessment before the patient is subjected to surgery. And likewise, while the patient is in the ward the night before the surgery, I personally believe no doctor goes to the patient to document the things like which side is to be operated upon, whether it is right side or left side, where the stoma is supposed to be formed. This is done by nursing staff. Right? And the consent form is put in front of the patient. Please यहाँ sign कर दें. What is written in that consent form? Neither the staff nor the patient and nor the tenders don't know anything. So, sir, in my opinion, these checklists, they are very good. But after once we have done our homework,
we have taught our basic stakeholders in the wards, in the hospitals, in the OPD. And then, sir, in the operating room, mainly WHO checklist, definitely if it is emphasized in true letter and spirit, it can avoid so many avoidable medical accidents, right, sir? And then, obviously, post-operatively, in the theater, the main stakeholders are an anesthetist and then followed by the surgeon. And then post-operatively, again, the surgeon operates and he endorses the notes, and the whole night we should spend with the nursing staff. And the nursing staff, the ratio must be 60:1 or maybe 60:2. And I think, sir, basic homework needs to be improved. बदर एक्सपो की तरफ से जो है एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है IEEE फेयर का, जिसके अंदर हम लोग अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है शोकेस करते हैं। बदर एक्सपो ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, वो हमें काफ़ी सपोर्ट भी करती है और यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज को भी उसने काफ़ी सपोर्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम, कासिम शेख here with BTV। अभी मेरे साथ मौजूद है CEO of Osaka Lighting सर शमीम आमिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सर? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हूँ, जान के और खुश हूँ। शमीम भाई, ओसाका के बारे में थोड़ा सा, ओसाका लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ओसाका लाइटिंग इस सब पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटिंग कंपनी है। चाहे पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, बड़ा इदारा, पार्लियामेंट हाउस हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, बड़े बड़े बैंक्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे होटल्स हो, हमारे 5 स्टार 6 स्टार होटल, सब अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की लाइटिंग की मसनूआत से रोशन हो रहे हैं। और ये हमारा अज़म है कि पाकिस्तान के जो अंधेरे हैं हमने वहाँ उजाला करना है, हमने उनको रोशन करना है। और बदर एक्सपो से हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना ताल्लुक़ है। इनका कोई भी इवेंट होता है, चाहे आइडियाज़ हो, चाहे ये इवेंट हो, और जो ये इवेंट होते रहते हैं, हम उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक छत के नीचे सब लोग आते हैं, यहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, बड़े बड़े यूज़र्स आते हैं सारे, तो हम इनके साथ बिल्कुल एज ए फैमिली की तरह जो है ना शिरकत कर रहे हैं। और हमें इससे बहुत इस्तिफ़ादा हासिल होता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे दुनिया में जो है ना नाम जाता है। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ओसाका इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है
लाइटिंग में, और इंशाल्लाह नंबर 1 ही रहेगा। अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी प्राइस की वजह से, अपनी मसनूआत की वजह से हर जगह ओसाका अल्हम्दुलिल्लाह रोशन कर रहा है पाकिस्तान को। शमीम भाई बहुत शुक्रिया, वंडरफुल आपके साथ बात करने, बहुत अच्छा लगा है। आपको बेस्ट विशेस। बाकी 2.5 डेज है, अभी तो डे 1 ही चल रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक। और आप गाला डिनर में होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। ठीक है, वही मुलाकात होगा फिर। थैंक यू। बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि ऐसी शख्सियत यहाँ पर आई है जिसने टेनिस बॉल क्रिकेट को बहुत बड़ा फरोग दिया है। अभी जो पीटीपीएल का गेम होने जा रहा है, पाकिस्तान टेबल प्रीमियर लीग के सीईओ ज़ोहैर नसीर साहब के हम थैंक्स से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमेशा क्रिकेट के लिए फ़रोग दिया। इससे पहले केपीएल चलाई, फिर केपीएल के बाद अभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। बड़ा क्रेडिट जाएगा उन तमाम मुंतज़मीन को जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। मैं डायरेक्टर मीडिया ज़ोहैर नसीर साहब चेयरमैन, आप जावेद मियादा साहब प्रेसिडेंट। अगर डॉट बॉल होती है तो सुपर ओवर होने के चांस है, और अगर रन बन जाता है तो आमिर स्पोर्ट्स चैंपियन बन जाएगी। बॉलर आए, फुल टॉस बॉल और चैंपियन बनी है, चैंपियन बन गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे आज सारा मैच देख के, और जो हमारी टीम आज यहाँ पे जीती है आमिर स्पोर्ट्स, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बड़ा अच्छा मैच रहा, और इसी तरीके से जो आज हमारी टीम रनर अप रही है, इन सब के लिए भी बड़ी तालियां होनी चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो एक क्रिकेट का एक हिस्सा है जिसमें जीत और हार चलती है। टैलेंट जाया हो जाता था, उनको मौके नहीं मिलते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैंने केटीपीएल को स्टार्ट किया, कराची टेबल प्रीमियर लीग को, उसमें मेरा मकसद यही था कि वो हमारा वो रॉ टैलेंट जो गलियों में बच्चे खेलते थे वो खत्म हो जाते थे, कि मैं उनको ऊपर लेके आऊं, और जो बेहतरीन टेप बॉल खेल सकते हैं उनको हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। तो फिर मैंने उस टेप बॉल को, केटीपीएल का जो हमारा टूर्नामेंट था, आप सब लोगों ने देखा उसको, कि वो मैंने स्टार्ट किया, उसमें एक लड़का भी मेरा जानने वाला नहीं खेलता। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर का जो भी टूर्नामेंट होगा वो बदर एक्सपो इसको पूरा स्पॉन्सर भी करेगी। यहाँ पे सब लड़कों के लिए यहाँ पे इंशाल्लाह जो बेस्ट होगा, यहाँ पे आप सब लोगों के लिए ये एक पूरा मैच ऑर्गेनाइज करके इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ खड़े होंगे। और आज जीतने वाली टीम के लिए मैं 50,000 का अपनी तरफ से ऐलान करता हूँ, और रनर अप टीम के लिए मैं 25,000 रुपए का ऐलान करता हूँ अपनी तरफ से, कि ये, और मैनेजमेंट के लिए जिस सारे लोगों ने यहाँ पे काम किया है, मैं इनके लिए भी आज 1 लाख रुपए का इनाम करता हूँ सारी टीम के, ठीक है। और पीटीपीएल नया नाजिबाबाद में 16 तारीख से 16 दिसंबर से इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है, तो सारे लोगों को मैं इनवाइट भी करूंगा, सब मेरे मेहमान होंगे इंशाल्लाह। और टेप बॉल को इंशाल्लाह हम एक ऐसे लेवल के ऊपर लेके जाएंगे कि जहाँ पे इंशाल्लाह हम इसको अपना नेशनल स्पोर्ट्स दुनिया के अंदर दिखा देंगे कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी का खेल है।
Hi there, Qasim Sheikh with BTV at PIMEC 2025. Currently, I'm just visiting one of the exhibitors' stands, and it's the Culture, Tourism, Antiques and Archives Department of Government of Sindh. I'm going to introduce you to one of their representatives, and I'll say hello and Assalamu alaikum to Mr. Adil Ahmed. How are you, sir? Walaikum salam, Qasim. I'm fine. Adil, beautiful setup you have here. Can you start by telling me a little bit about the work that you're doing and how you're finding the exhibition so far as well? Qasim, we are here to present Culture and Tourism Department, Government of Sindh, and we've installed 5 different artisans and craftsmanship stalls, small stalls, which you can witness here. And beside it, we have 3 stalls representing Tourism Department, which is highlighting the beauty of Sindh and asking people to explore this beautiful Sindh. PIMEC 2025. Is this your first time here or is this your second time here? This is our second time here in PIMEC. PIMEC 2025, the second edition, as you know. And we are here and we are pitching 4 projects here for foreign investors and tourism department. One at the Hawke's Bay, second one is at the Third Parker, a very beautiful region. And third one is near the sea. The fourth one is at Sakha. So we are expecting a good results. So the fact that you've come back second time round, does that mean that Badar Expo Solutions are doing a good job and you're happy with what you're experiencing here? Although exactly Badar is doing a great job, as you can witness it. Badar have decorated a whole of this expo like New Year Eve. Adil, it's been lovely to talk to you. I wish you all the very best for the rest of PIMEC, and hopefully we will talk again soon, maybe next year. Yes, hopefully we'll talk again, Qasim, next year. Thank you, Badar Expo, for organizing such a beautiful event. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, कासिम शेख here with BTV. अभी मेरे साथ मौजूद है सैयद नुसरत अली, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर फॉर नेटसैट. अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई. वालेकुम अस्सलाम. कासिम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सैयद भाई, वेरी वेल, थैंक यू. आज हम आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट दिखाएंगे. सैयद भाई हमें बताएगा इनके बारे में. ज़रा आप अपने प्रोडक्ट में बारे में बताओ प्लीज. अच्छा, यहाँ पर हम जो है हम बेसिक स्पोर्ट्स की प्रोडक्शंस करते हैं पाकिस्तान के अंदर. अच्छा, जैसा कि आपको पता है कासिम साहब के स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, उनके मुताबिक होती है. और पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था कि जो हमारे पीसीबी के या इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसकी प्रोडक्शन कर सके. हमारे सीईओ हैं फैसल रफ़ीउद्दीन साहब. उनका ये विज़न था और वो ट्रैवल करते हैं बाहर, यूरोप में काफ़ी उन्होंने देखा और प्रोडक्शन देखी हैं. तो उनकी बदौलत हम ये करने में यहाँ कामयाब हुए हैं. और एक हमने ओबी ट्रक यहाँ पर इंपोर्ट किया है और कुछ उसको मॉडिफाई किया है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से. तो आइए हम आपको चल के दिखाते हैं कि वो ट्रक हमने ओबी ट्रक किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है. और पाकिस्तान में ये पहला ओबी ट्रक है. आ जाओ हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये एक वीडियो स्विचर है हमारा 84 इनपुट्स का, यानी कि 84 इसमें हम सोर्सेज डाल सकते हैं, वो चाहे कैमरे की शक्ल में हों, प्ले आउट सर्वर्स हों, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हों. ये फीचर है हमारा जिससे हम तमाम कैमरे कंट्रोल करते हैं. यहाँ पर एक VMD और एक डायरेक्टर बैठता है जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है. ये मुख्तलिफ़ प्रीव्यू आपको नज़र आ रहे होंगे, हर कैमरे का प्रीव्यू है ये सारे. और जो फाइनल हमारा आउटपुट होता है वो डायरेक्टर के थ्रू जो है वो फाइनल स्क्रीन पे चला जाता है. आगे आप आते हैं तो ये हमारा कम्युनिकेशन पैनल है जहाँ डायरेक्टर बैठता है और वो सारा कम्युनिकेट करता है कैमरामैन्स के साथ कि किसका कौन सा फ्रेम बनेगा, क्या होगा. तो वो सारा यहाँ से ऑपरेट होता है. उसके आगे हम आते हैं तो ये आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, EVS कहलाते हैं ये 1 2 3 4 5. इसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि जब कोई प्लेयर आउट हो जाता है या कोई बॉल नो बॉल हो या वाइड बॉल हो और उसका डिसीजन अंपायर ना ले सके, ग्राउंड अंपायर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो थर्ड अंपायर को रेफ़र करता है. तो उस वक्त क्या होता है कि डायरेक्टर जो है वो रिप्ले मांगता है कि मुझे रिप्ले दिया जाए कि मैं इसका डिसीजन लूँ कि ये आउट है या नहीं है. तो यहाँ से रिप्ले जो EVS ऑपरेटर है वो डायरेक्टर को प्रोवाइड करता है. ये जॉक सिस्टम लगा हुआ है, इसमें एक फ्रेम पीछे एक फ्रेम आगे हम करने की सहूलत है हमारे पास. ये जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्टर को फाइनल व्यू नज़र आता है और वो अंपायर को कहता है कि ये स्क्रीन है, अब इस पर आप अपना फैसला दे दीजिए. तो ये सारे EVS हैं जो रिप्ले दिखाते हैं.
इसी तरीके से आप ये राइट साइड पे देखेंगे हमारे, तो ये हमारी जो डेस्क है ग्राफिक्स CG की है। अक्सर आपने मैचेस में या क्रिकेट के स्पोर्ट्स में देखा होगा कि उसमें नेम बैंड, स्कोर, तमाम चीज़ें चलती हैं, तो वो यहाँ से ऑपरेट होती हैं। अब आगे चलते हैं तो मैं आपको ऑडियो सिस्टम और जो हमारे कैमरा है कि रिमोट्स हैं वो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये तमाम चीज़ें हमारे रिमोट हैं कैमरों के। एक मैच हमारा डे में स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे, तो लाइट डिफरेंट होती है सन की, सूरज की लाइट जो है, और वो 12 बजे डिफरेंट हो जाती है, 3 बजे डिफरेंट हो जाती है। तो इसके थ्रू जो है वो तमाम कैमरे के अपर्चर और लाइट, वो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल की जाती हैं। यहाँ लोग बैठे होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, अगर बाहर थोड़ा सा डल हो जाए जी, या थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो जाए जी, ये यहाँ से एडजस्ट, जी यहाँ से एडजस्टमेंट होगी और वो तमाम कैमरों के टेम्परेचर एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 2 कैमरे लगे हैं उनके कलर टोन कुछ और आ रही हो, 2 की मुख्तलिफ आ रही हो। वो तमाम चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होंगी और यहाँ बैठ के जो CRE होगा वो तमाम चीज़ें कंट्रोल कर रहा होगा। ऑडियो कंसोल नज़र आ रहा है आपको, जहाँ जितने कमेंट्री चल रही होती है या टाइटल के म्यूज़िक चल रहे होते हैं या कि बॉल के जो हिट होती है विकेट को या बैट की, उसकी साउंड, वो तमाम की तमाम इस यूनिट से कंट्रोल होती है। ऑडियो, इसको आपने देखा होगा, ये पीछे हमने साउंड प्रूफिंग भी की हुई है ताकि वो प्रॉपर तरीके से सुन सके। तो ये तमाम ऑडियो है जो यहाँ से कंट्रोल करता है किसी भी स्पोर्ट्स के, क्रिकेट मैच का या फुटबॉल का या हॉकी का। तो आप ये मुझे बताइए सैयद भाई, अभी तक कौन से मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स में आपने इसको इंट्रोड्यूस किया है? हम अभी ये लेकर आए हैं पाकिस्तान में। इससे अलावा ये है कि दुबई में हमारे जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, दुबई में हमारी कंपनी काम कर रही है, वहाँ भी हमारे ऑफिस हैं, दुबई में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको पाकिस्तान में इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग रूल्स हैं वो यहाँ कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। और हमारे जो CEO हैं फैसल रफ़ीउद्दीन साहब, हमने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान में ऐसी चीज़ लेकर आइए ताकि हम पाकिस्तानी अपनी ब्रॉडकास्टिंग करें। हम किसी और मुल्क से या किसी और ऐसी कंट्री से जिससे हमारे मामलात अच्छे ना हो, हम वहाँ से क्यों ये चीज़ें मंगवाएं। हम खुद पाकिस्तान में अपने स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट हैं वो हम कवर करेंगे। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो मीडिया से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है इस पे ट्रेनिंग करने का। तो वो हम आगे चल के आगाज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर ट्रेनिंग भी इसकी देंगे यहाँ पर, कि जो बाहर मुल्कों में जाके लोग ट्रेनिंग लेते हैं वो हम पाकिस्तान में प्रोवाइड करेगा नेट सेट। वेरी गुड। सैयद भाई, you've been second day PIMEC exhibition का, इंटरनेशनल एक्सिबिशन, पाकिस्तान नेवी एंड पार्टनरशिप विद बदर एक्सपो सॉल्यूशंस। रिस्पांस कैसे अभी रिसीव किया आपने? रिस्पांस हमारे पास बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो हमारा OB ट्रैक है ये थोड़ा यूनिक है, तो उसकी वजह से लोग आते हैं, लोग घर पे बैठ के मैच देखते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल लोग भी हैं, वो यहाँ आए। हमारे पास पाकिस्तान टेलीविज़न से TV की टीम आई थी और जियो सुपर से भी टीम हमारे पास आई थी। वो उन्होंने देखा है और बड़ा अप्रिशिएट किया है इसको, और उन्होंने कहा कि अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग में सर फहरिस्त है, उसको बाहर जाने के लिए या किसी कंपनी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा फीडबैक है हमारा। वंडरफुल टू हियर। और मैं होप करता हूँ इंशाल्लाह कि आपका प्रोडक्ट पूरा दुनिया में जाए, क्योंकि मैंने अभी तक इतना लेवल का नहीं देखा है। तो आपको थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरीके से किया है, और बेस्ट ऑफ लक आपको एक्सिबिशन में, यू नो, एंड आई होप यू हैव अ गुड सक्सेस हियर, और आगे भी जाके। बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू। और एक बार मैं फिर बदर एक्सपो सॉल्यूशन और ज़ोहैर नसीर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया PIMEC के थ्रू कि हम अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर सकें। तो एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूंगा ज़ोहैर नसीर साहब का। थैंक यू वेरी मच। चक्कों की बरसात करनी होगी। खेल की क्या दिल का विश्व नासिर पठान का यंग टैलेंट है, उनके लिए आज बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि ऐसी शख्सियत यहाँ पर आई है जिसने टेनिस बॉल क्रिकेट को बहुत बड़ा फरोग दिया है। PSL तंबाकू सुपर लीग जिसका एडिशन नंबर ये 11 है। ये जो आपकी लीग है वो बहुत ही ज़बरदस्त लीग दिखाई दे रही है।
अगर डॉट बॉल होती है तो सुपर ओवर होने के चांस है, और अगर रन बन जाता है तो आमिर स्पोर्ट्स चैंपियन बन जाएगी। बॉलर आए, फुल टॉस बॉल और चैंपियन बनी है, चैंपियन बन गई है। 4 साल हो गए, हमने पहले KTPL किया, उसके बाद इंशाल्लाह 16 to 31 हम लोग पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग करने जा रहे हैं। विनर टीम आमिर स्पोर्ट्स को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए आज का ये सीजन 11 अपने नाम किया। सेकंड टीम जो हारी है वो मेरी नज़र में हारी नहीं है, वो भी जीती हुई है। जो यहाँ तक आई हुई है वो भी, इसको हम नहीं कहेंगे कि वो हारी हुई, आप भी जीते हुए हो। हमारे यहाँ पे जितनी आवाम यहाँ पे आई है, जहाँ इस इलाके के सारे लोग, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया। और जो हमारी टीम आज यहाँ पे जीती है आमिर स्पोर्ट्स, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बड़ा अच्छा मैच रहा। जिस तरीके से मैंने KTPL को स्टार्ट किया, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग को, उसमें पूरे पाकिस्तान से मैंने उन सारे लड़कों को मेरिट में लिया। इस टेप बॉल को मैंने पाकिस्तान के अंदर भी रजिस्टर्ड करा दिया और मैंने UK के अंदर भी इसको रजिस्टर्ड करा दिया। इंशाल्लाह हम इसको अपना नेशनल स्पोर्ट्स दुनिया के अंदर दिखा देंगे कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी का खेल है। अभी जो PTPL का गेम होने जा रहा है, तो मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन की है और इंशाल्लाह 2-3 सीजन जो है हम इंशाल्लाह साल के अंदर लेके आएंगे। और PTPL नया नाज़िमाबाद में 16 तारीख से 16 दिसंबर से इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। तो सारे लोगों को मैं इनवाइट भी करूंगा, सब मेरे मेहमान होंगे इंशाल्लाह। उस ग्राउंड के अंदर आए और हमने अपने स्पोर्ट्स को इंशाल्लाह वहां पे इसको उठाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बुरा समझूं उन्हें, मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। बुरा समझूं उन्हें, मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। खुदी को कर It's 3 p.m.
Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Najaf Malik Khan, Chief Operating Officer of Sindh People's Housing for Flood Affectees, to speak on the important topic, Sindh People's Housing for Flood Affectees, world's largest housing reconstruction initiative. Mr. Najaf Malik Khan. Thank you very much, Ji, and a very good morning. It's an honor and a pleasure to be here to presenting the case of one of the largest housing reconstruction initiative post any climate-induced disaster in the world. So there were a few terms being taken by the previous colleague or the presenter who was here in terms of resilience, in terms of cybersecurity, in terms of information technology, and coming out of the sea to the land. We are the people who actually been working in terms of, integrating all these technologies and, of course, advanced methodologies to carry out the largest, development perspective projects in the world. So introducing world largest housing reconstruction program, that is Sindh People Housing for Flood Affectees. Next, please. So basically giving you the background, in 2022, Sindh was devastated by unprecedented flooding. The precipitation remained there for around 2 months. The whole of the Sindh was, around 74% of the Sindh was inundated. It was calamity hit, it was actually declared as calamity hit, and 24 out of 30 districts were severely damaged in 2022 floods. Around population that was affected was around 12.36 million people. And as per the data validation carried out by Pakistan Army, by the federal government and the government of Sindh, around 2.1 million houses were damaged or destroyed in this devastating event. We started with the initial financing of the World Bank. It was initially $500 million with co-financing for the government of Sindh share of around 150 million US dollar. But gradually, we actually have accomplished the total financing of around $2.1 billion as of date, including the support from Islamic Development Bank, from Asian Development Bank, and of course, a huge support from the government of Pakistan and government of Sindh also. In addition to that, we have got grant financing from the UN agencies. In terms of the largest player that has given us the grant financing is UNIDO and EU. And we are currently having discussions with European Investment Bank also for the provision of around 115 million euros. So financially and scalably in both cases, this is one of the largest initiatives which was actually spearheaded by the government of Sindh. Now, actually, what were the factors actually which supported the mobilization of such a huge financing within the time frame of 2.5 years? Was basically the transparency, the efficacy of the system, and the team that was working behind in actually reconstructing 2.1 million houses in a very short duration of time. Previously, we had these experiences in Pakistan. In 2005 earthquake, probably one of our colleagues, few of our colleagues might have heard about it. Then it was 2015 Nepal earthquake. And these two major initiatives collectively, the housing reconstruction program was around 1.6 million around. But only in Sindh, we are working at around 2.1 million housing. So if you look at the factors which actually supported the program, we have got 3 bigs out of the 4 bigs as of audit firms. PwC is our external auditor. KPMG is internal auditor, and Ernst & Young is basically project implementation and support consultant. So each and every transaction is being accounted by 3 large auditors in addition to the audits that are being carried out by the government of Pakistan also. And for the grant financing, BDO London is our auditor. So this transparency factor actually supported us in mobilizing this huge, enormous amount to support the flood affectees within the span of 2 years. At SPHF, we are a very lean organization. We are hardly, 17 to 20 professionals, while, the techno structure and the support structure comprises of another 15 to 20 people.
But we heavily relied on the private sector when it comes to technology transfer, when it comes to implementation on ground, and when it comes to assuring sustainability and transparency and innovative future. So if you look at this slide, we are working with the 5 largest RSPs, which are rural support programs and NGOs in Pakistan. And these are also the microfinance institutions. So as a housing reconstruction program, we are giving a kind of a support for reconstruction of a multi-hazard resilient house. If you look at the history of Sindh, the Sindh have been affected in 2010 due to riverine flooding, 2011 due to precipitation, 2014, 2015, 2018, and then again in 2022. So it was inevitable to launch a program which was basically to support, and again the word was being used, that was resilient, that you have to move from regular orthodox construction method to a more resilient construction, more resilient ecosystem where recurring floods, and which is, of course, Pakistan is most exposed to these kind of climate impacts, and it is inevitable that this is going to happen again. So that's why it was extremely important to invest in these areas at this point in time. And of course, the other logos that you can see are those who are supporting us in terms of engineering designs, those who are actually working with us for management information system, and so on and so forth. So as of date, as I've already mentioned, that the initial validation, the scope of the work was to reconstruct around 2.1 million housing units. If people who are sitting here, the colleagues who are sitting here are aware of Sindh, this is the only program who have actually supported inclusion of more than 1.45 million people in the regular financial system of Pakistan. So these people were those who never had been to the bank. These were the people who never has seen how banking and financial system works. Now, these people have regular, normal accounts in commercial banks, and these support, social support or any other support, can be provided directly to these people in a very transparent manner. We have already initiated housing reconstruction of 1.4 million housing units. Around 100,000, 1 million plus housings are at the plinth level, while the completion rate is around 650,000. Currently, keeping in view the advantages and taking the advantage of the technology, the current certification rate is around 100 to 125,000 per month at various levels. So the program is currently, it's at peak, and around 40 to 50,000 houses are being completed every month. In addition to the housing component, there are other benefits of this program also, and the largest benefit actually, if you can look at, is basically the job creation under this program, because this project actually, the capital was revolved. There is no contractor involved in the whole program. There is no intermediary involved in the whole program. The money is going directly into the accounts of the beneficiary. It is an owner-driven program, and the money is being circulated in the local economy, resulting in the boost of economy, not just in terms of money circulation, but also in terms of development of a complete value chain which actually support job creations in Sindh across 24 districts. And of course, finally, the social cohesion, and this is the first time when the state is directly talking with the people, and it is direct in contact with the beneficiaries on a single click or on an application actually. So currently we are working on development of application in which we are registering all our beneficiaries, and it is the relation between the state and the citizen that actually can have discussion on futuristic rural development perspectives. I think it was a statement from the World Bank. This is why this project is so important to us, because in fact this miracle in Sindh province, and it is a miracle. There have been smaller floods in many countries, and government has never figured out how to provide housing. Isn't just about the bricks and the mortar, isn't just about the house, but is about the family that lives in the house. Basically, these were the statements. In addition to Sindh, we are also now expanding to Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa at this point in time, and also we are working to support around more than 2,000 houses in Dera Ismail Khan, Khyber Pakhtunkhwa, and we are supporting housing units in Balochistan also.
predominantly in Jafrabad. Now, as I've already mentioned, this is a complete ecosystem in which, digital ecosystem in which we are working. So it is all technology based. So real-time synchronization, real-time reviews, real-time disbursements. It's an amazing ecosystem. If we would really, would like to give a brief on the same. We have got a stall in the main arena actually. So if you are interested in, so we are currently looking at LLM, we are command-based systems, we are doing, our accounting system is on SAP, and all the systems currently are integrated in terms of taking out the development initiatives. So it's a stage-based component in which, initial damage assessment and validation has been taken. After that, the first installment of around 75,000 is being released to the beneficiary. After the release of the first installment, the beneficiaries goes to the bank, activates the account, take the money, they construct their plinth, which is against standards. Second installment of 100,000 and little, third installment at completion of roof. And of course, keeping in view the climate change perspective, we are also supporting social forestry and plantation at the household level. So these are additional ESMF plus initiatives that we are taking. As I've already mentioned, that monitoring is real time on a single click, and this is available at the stall also in our in SPHF stall here in the arena, that you on a single click can see the progress of each and every household, which is geotagged at what stage and what level it is, and that can be monitored from Karachi, from anywhere else online on real-time basis. So one of the biggest questions was what about the social infrastructure? Housing is one part of it. But if you want to talk about elements, we have also digitalized the for the social infrastructure. We are digitalizing villages. Currently, we have digitalized more than 1,000 villages in which each and every household is tagged in terms of current available facilities. And this is the readiness facility that is going to support us in terms of developing future programs and investments, especially when it comes to WASH and allied infrastructure in terms of settlement improvement. So this is the ongoing work, keeping in view the scarcity of time. I'll skip that. So I've already mentioned that this is the kind of work that in terms of the social infrastructure and settlement improvement is going on. And we are planning to expand it to around 40,000 villages in which you have got ready projects to be delivered, digitalized. And this digital integration can be done with the planning and development department and other departments that are working in Sindh. Currently, we have secured financing of around $600 million under this initiative. Around 40,000 villages will be covered with benefiting population of 4.45 million G. And finally, I think this is the transformation that we are talking about. So this is where the people were living post pre-flood, and this is the transformation that is happening in Sindh as of date today. Thank you once again, Ji. It was a pleasure being here and an honor being here, Ji. Thank you very much. Thank you, sir, for highlighting the multifaceted challenges posed by floods and for your valuable insights. We now request our Honorable Chief Guest, Rear Admiral Faisal Amin, Hilal-e-Imtiaz Military Sitare Basalat Commander Coast, to kindly address the audience, followed by souvenir presentation ceremony and group photograph.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, distinguished guests, delegates, maritime community, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is an honor for me to be part of this important session of the International Maritime Conference on Maritime Security Challenges. My special thanks to National Institute of Maritime Affairs and Naval Headquarters Ops Branch for having invited me for this session. During today's discourse, our distinguished speakers with vast experience in maritime field have deliberated on issues of maritime security. These include use of modern means to harness the artificial intelligence and big data for better maritime domain awareness, smart ocean technologies, cyber security means to address common maritime security challenges, and the 2035 cyber doomsday scenario highlighted by one of the speakers is a real eye-opener. Ladies and gentlemen, today's maritime domain demands simultaneous focus on security and commercial innovation. The increasing number of cyber attacks on global ports and shipping dictates that digital transformation without robust security means and systems is not pragmatic. Conversely, security without adopting technological innovations places us at greater risk and exposes to vulnerabilities in global market. Pakistan must embrace maritime transformation with sophistication, blending the cutting-edge technology, sustainability, and comprehensive framework. As we know that AI-powered maritime domain awareness systems can fuse satellite imagery, sensor data, and communication intercepts into actionable working and an integrated surveillance architecture designed to link satellites, radars, UAVs, and maritime patrol aircrafts can ensure safe and uninterrupted use of the maritime zones. Apart from this, the digital transformation of our ports and maritime infrastructure would save time, add efficiency, and security in the face of complex cybersecurity challenges that demand quick response to the threats. Cybersecurity must extend beyond ports to entire maritime ecosystem, protecting undersea cables, port facilities, shipping networks, and command structures while ensuring seamless operational continuity. Ladies and gentlemen, Pakistan's maritime security capabilities contribute to the regional stability and global connectivity. Pakistan Navy's contributions in ensuring safety of global commons is evident from its regular participation in the collaborative maritime security frameworks and independent deployments in our area of interest. Distinguished delegates, Pakistan today stands at a maritime crossroads where we can either accept the status quo or transform into the maritime security powerhouse based on our geography and capability. This requires smart ports with integrated security, cybersecurity frameworks, climate-resilient infrastructure, and AI-driven threat detection systems that can drive growth while ensuring comprehensive protection. Together, we must now advance with determination for a stronger, more secure, and prosperous seas that safeguards trade, blue economy, and ensure global connectivity through robust maritime security. In the end, I extend my sincere appreciation to all the distinguished speakers and panelists whose valuable insights have enriched this forum and highlighted issues which concern us all. I must pay tribute to the Ministry of Maritime Affairs, Pakistan Navy, and the National Institute of Maritime Affairs for gathering the maritime community and conduct
this conference. I thank you all and Pakistan Zindabad. Thank you, sir. We request our honorable chief guest to kindly remain on stage so that we can move forward with souvenir distribution ceremony. We request Rear Admiral Javed Iqbal, Hilal-e-Imtiaz Military, to please come on stage and join our honorable chief guest for presentation of souvenirs to our distinguished speakers. I invite Mr. Bilal Khan Kakar. Professor Dr. Azhar Ahmad. Rear Admiral Dr. Nasser Ikram, Hilal-e-Imtiaz Military, retired. Mr. Najaf Malik Khan. Ladies and gentlemen, we now request Rear Admiral Javed Iqbal, Hilal-e-Imtiaz Military, to present the souvenir to our honorable chief guest. I request all the esteemed speakers to join honorable chief guest for a group photograph. बदर एक्सपो की तरफ से जो है एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है IEEE फेयर का, जिसके अंदर हम लोग अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है शोकेस करते हैं। बदर एक्सपो ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, वो हमें काफ़ी सपोर्ट भी करती है और यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज को भी उसने काफ़ी सपोर्ट किया है। Thank the dignitaries and all the guests, the sponsors, the exhibitors who have been with us
through the years and have made this event possible. It is a great opportunity for the investors and even the dealers and the distributors to participate and engage in this seminar, and I further request the management of Badar Expo to continue these seminars for the general awareness of the people. Ladies and gentlemen, please welcome Commodore Ehsan Ahmed Khan, Sitare-e-Imtiaz Military, Deputy President, Maritime Center of Excellence, Pakistan Navy War College, Lahore. He will present on the subject Integrating Naval Modernization, Indigenous Defense Production and Blue Economy, Building a Self-Reliant Maritime Future for Pakistan. You're welcome to the stage, sir. Vice Admiral Ahmed Saeed, Hilal Imtiaz Military, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's indeed an honor for me to be on this podium today, and my greatest gratitude to the President Nima, both incoming and outgoing, having given me this opportunity to stand here on a very important forum where the maritime future of our country is being discussed threadbare, and where the convergence of industrial and economic aspiration comes to a place from where we can draw our decisions for future as well. Ladies and gentlemen, throughout the history, the seas have not only connected continents, but also shaped civilization. From Phoenician traders to British admirals, the story of global power is, above all, the story of sea power. As an American historian and strategist, Alfred Theron argued in The Influence of Sea Power Upon History. He said, and I quote, "Control of the seas through commerce, naval capacity, maritime industry determines the rise and fall of nations." His English counterpart, Sir Julian Corbett, later expanded this vision and asserted that command of the sea is as much about sustaining trade and logistics as it is about projecting force. Ladies and gentlemen, these insights remain strikingly relevant for Pakistan today. With 1,000+ kilometers coastline, access to the Arabian Sea, and proximity to the world's busiest waterways and choke points, like the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb, maritime strength is not a luxury, but a strategic necessity for Pakistan. To secure this space, Pakistan must modernize its navy, strengthen indigenous defense production, and expand its blue economy, not as an isolated effort, but as interlinked component of one national maritime ecosystem. My central thesis here is simple. Investment in naval modernization and indigenous defense production is not a cost to the state. It is an investment in national economic growth. Every shipyard built for naval production becomes a facility capable of constructing commercial vessels, offshore platforms, and ocean energy structures. Every engineer trained for naval systems integration can later serve the blue economy
in ocean research, smart ports, and ship repairs. Every innovation in composites, propulsion, and AI-based logistics multiplies civilian benefits across fisheries, coastal energy, and maritime transport. This approach has been proven by leading maritime powers. Although many models are available to justify this argument, however, given the time constraint, I will be covering only 4 models here. South Korea offers the model of dual-use maritime developments. Hyundai Heavy Industries builds both Aegis destroyers for the Republic of Korean Navy and LNG ship supertank within shared facilities. Hanwha Ocean, formerly called as Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, produces KSS-2 and KSS-3 submarines, while also designs commercial carriers, advanced propulsion, and automation systems. Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering develops autonomous vessels, green propulsion, and underwater robotics for both naval and civilian markets. Turkey's success story is equally enlightening. Its national shipbuilding vision targets both defense and self-sufficiency and maritime export growth. Companies like STM and ASFAT, operating under the hybrid public-private framework, produces frigates, corvettes, submarines, and logistic ships while supporting commercial shipbuilding and port logistics. The same engineers who design naval systems also develop maritime softwares and port management tools. China institutionalized integration through its civil-military fusion strategy. China State Shipbuilding Corporation, now merged with China Shipbuilding Industry Corporation, builds PLA Navy ships alongside LNG carriers and container ships. Subsidiaries like Hudong Zhonghua and Dalian Shipbuilding operates as dual-use facilities serving both PLA Navy and global clients. The China Ocean Engineering Shanghai Company and Sanya Deep Sea Science and Technology Center links ocean energy, deep sea exploration, and naval oceanography. India's dual policy of Atmanirbhar Bharat and Sagarmala links self-reliance and blue economy growth. Mazagan Dock Shipbuilders, Garden Research, and Goa Shipyard produces naval and commercial crafts. Larsen & Toubro bridges submarine construction, offshore infrastructure. However, ladies and gentlemen, to realize such an integration, Pakistan must first confront its structural challenges. Pakistan's maritime industrial ecosystem at best be described as fragmented and suffers from structural and operational challenges. This fragmentation is the major reason why the sector's contribution to the national GDP is 0.4% to 0.8% despite its inherent potential. Only 2% of GDP is spent on R&D, which is the lowest in the region as compared to 4.5% in South Korea. Maritime blindness pervasively impedes research and maritime-related subjects. Absence of a clear legal framework for defense and civilian industrial cooperation hinders private investment. Complex and inconsistent tax policies, cumbersome tax and trade procedures, bureaucratic red tape, weak contractual enforcement, and a general lack of policy consistency accentuates bottlenecks in business environment. There exists a significant gap between skills, education level, and types of jobs available in the labor market and those sought by the workforce. We stand at 168th out of 193 on UNDP Human Development Report, which is a low human development category. Historically, the National Economic and Development Strategy has been fixated on land resources, leading to the continuous neglect of the vast maritime potential. Pakistan's share of global shipbuilding output is negligible. The global market is overwhelmingly dominated by China, South Korea, and Japan, which together accounts to close to 90% of the total shipping output. Ladies and gentlemen, these challenges are not insurmountable. They simply indicate need for institutional alignment,
policy coherence, and a visionary investment. Having said that, every challenge has an opportunity. To avail these opportunities and harness the God-given potential in our country, we need to create dual-use maritime industrial complexes in Pakistan that necessitates a strategic approach through an exclusive, long-term national blue growth policy, which clearly defines goals for both commercial exploitation and national security requirements. This would essentially need a regulatory framework that streamlines the rules of business, attracts investment, and adopts international standards apart from incentivizing private sector to take lead in joint ventures. For infrastructural development, we need to fast-track integrated maritime industrial complexes at Port Qasim and Gwadar, ensuring robust infrastructure. Investment in shipbuilding, whereby Gwadar shipyard and licensing of private shipyards should be assigned a national priority. Academic institutions should be linked with the defense and commercial production industries through a multifaceted approach involving structured collaboration, joint R&D projects, human resource development, and policy-level initiatives. That is the triple helix model of academia, industry, and government. We should support startups in autonomous vehicles, predictive maintenance, robotics, green propulsion, and contemporary technologies through science and technology parks, incentives such as PMSTP. Creating partnerships and joint ventures with successful models such as STM and Hyundai Heavy Industries to kickstart maritime industrial growth. Ladies and gentlemen, if Pakistan successfully integrates naval modernization, defense production, and blue economy as a synergistic hub industry, this integrated approach would leverage national security needs to drive economic growth, technological innovation, and sustainable use of marine resources. These dividends would draw for shared facility, and supply chains will reduce cost and increase innovation output and generate thousands of direct and indirect jobs. The government of Pakistan has a vision to increase the maritime sector's contribution to national GDP from 0.8% to 4%, with a long-term goal of the blue economy contributing more than 100 billion by year 2047. Defense and commercial shipbuilding exports could collectively and significantly add to this growth. Local production of propulsion systems, composites, and sensors will reduce import dependence. And finally, a robust domestic maritime industrial complex would enhance deterrence, resilience, and sea-based not critical of warships, but of national industry systems, but renewable energy solutions. Let our maritime embody both security and sustainable prosperity. If we succeed, we will also have a fishing trawler, a research vessel, and an offshore platform. That is how nations evolve a maritime participant into a maritime power. And in my reckoning, ladies and gentlemen, is how Pakistan will chart its course towards a self-reliant maritime future, where the sea becomes and prosperity. Thank you very much. Thank you, sir, for shedding light on a very impactful and thought-provoking topic. Our final speaker for today is Mr. Muhammad Mubashir Hussain, Marketing Manager at Connectic Private Limited. He will address on the topic, Impact of Emerging Technologies in Developing Industries, his presentation time and blue economy sectors. Really essential for Pakistan's industrial growth. Pakistani industries needs to have efficient production facilities. They must adopt localization and be competitive to survive. During my talk, I will highlight some key emerging technologies in the developing industries and how Connect-haq, to which I belong, is helping Pakistan industry adopt such technologies. I will now list some key emerging technologies. First one is artificial intelligence and machine learning. They are helping analyze large amount of data
generated by industrial sensors that can be used for predicting major faults and optimizing processes to avoid expensive shutdowns. And next is the Internet of Things, or IoT, or Industry 4.0. It provides interconnected sensors, devices, and machines that ensure automated industrial processes, real-time monitoring, and smart manufacturing with minimal human intervention. On number 3 is robotics and automation. It is used for automated manufacturing, quality assurance, and operation in harsh or remote environment. Next is the advanced energy systems, renewable energy, and storage. With industrial power costs being a key challenge for Pakistan, employing energy-efficient machines and power generation using renewable energy resources like solar and wind are really essential. Storing energy is possible, but is expensive. Next comes cybersecurity. In this era, in which major industrial equipment are interconnected through the internet, for real-time remote controls, cybersecurity is essential to avoid cyber attacks. Next come additive manufacturing, 3D printing, and reverse engineering. They are required for local manufacturing of essential spare parts that Pakistan industries require. And finally, space, geospatial, and remote monitoring, where the satellite is required for smart agriculture. That same data can be used for fleet management and providing call and data connectivity at remote locations throughout Pakistan. Now I will highlight the developing industries in Pakistan. Some of them are in the phase of development or are somewhat transforming. First one is manufacturing. Their share in GDP is declining with time. This shows a challenge and opportunity for upgrades. Next is textile and apparel. They are the largest employers and have 60% share in Pakistan export. Next come agriculture and agro-processing. Agri-tech, smart farming, and automatic agro-processing are growing by time. Next come energy and renewables. Given Pakistan's energy constraints and cost pressures, industries are adopting the use of renewable energy resources and energy storage. Electric distribution companies like K Electric are inclined towards the use of smart grids. Next comes assembling and usage of EVs is growing in Pakistan, will lead to lesser petroleum imports, inshallah. Next come industrial instrumentation and automation. As industries upgrade, demand for industrial real-time control and monitoring is increasing with time. And finally, maritime, marine, and blue economy. Given primary focus, industries offering maritime, ports, shipbuilding, and offshore infrastructure building services are also developing. Now the main topics, the impacts of emerging technologies. And I will give some concrete examples to explain how emerging technologies can impact the developing industries. Number one is manufacturing and textiles. Like I mentioned, IoT, or Internet of Things, and sensors and automation solutions can reduce downtime, improve yield, and enable predictive maintenance. Agriculture and agro-processing. Data obtained through drones and geospatial data from satellites can help optimize irrigation and save water, which is a very essential commodity for Pakistan. Reduce fertilizer and pesticide usage and ensure optimum crop health. Energy systems. Use of renewable energy resources reduce power costs, and smart grids improve grid stability, thereby enabling industrial growth. Automotive and EVs. Energy efficient and locally manufactured BLDC motor drives, power electronic systems, battery system, and their optimum system integration assist the localizing efforts of industries. Reducing dependence on expensive imports. Maritime, marine industries. Digital twins, automation, remote monitoring, and predictive maintenance is made possible. Now I will highlight the contribution of ConnectTech, to which I belong. ConnectTech, which is assisting developing industries of Pakistan in adopting the emerging technologies. ConnectTech specializes in developing, co-creating, and commercializing advanced and emerging technologies with a focus on industrial, agriculture, biotechnology, and health sciences. Some major capabilities are instrumentation and control, calibration services, condition monitoring, digital control system design, robotics and automation, 3D printing, and reverse engineering. Services offered include on-site heavy equipment calibration, failure analysis, design and fabrication of industrial plant components, enabling industries to raise quality and reliability locally. ConnectTech can also have industries move from reactive to predictive maintenance and assist with localizing critical components like motor drives and spare parts.
For energy sector, Connectec is mainly offering industrial UPS and for EVs, BLDC motors and their controllers. For maritime applications, Connectec can offer instrumentation and control, condition monitoring and automation services relevant to shipbuilding, port maintenance and offshore installation. And Connectec also provides training for welding and non-destructive testing inspections. Connectec's vision is connecting technologies for localization and innovation for national prosperity. And at the end, I'll encourage you to identify any one core area in your organization where an emerging technology could yield significant benefit and deploy a pilot project. And I will end my presentation. I am confident that by embracing emerging technologies and supporting developing industries, Pakistan can accelerate its industrial growth, create more jobs, and reduce import dependence. Thank you. Thank you, sir, for emphasizing the transformative role of emerging technologies in driving industrial innovation and strengthening maritime economic growth. We now request our Honorable Chief Guest, President NEMA Vice Admiral Dr. Ahmed Saeed, Hilal-e-Imtiaz Military, to kindly address the audience, followed by a souvenir presentation ceremony and a group photograph. Bismillahirrahmanirrahim. May the blessings of Allah be upon you. Excellencies, foreign dignitaries, flag officers, members of the business community, academia, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. As we conclude today's session, I would like to express my heartfelt gratitude to all the speakers for their very valuable contribution in making this session a success. The discussions today have reaffirmed that realizing Pakistan's blue economy potential is also about financial innovation, central to its integration into the national economy through innovative approach in framing our maritime policies and governance regimes. A report by the Ocean Potential states that signifies that a single dollar invested into the maritime side has a minimum sure potential of 5 times return, and in many other cases, it is much higher than that. This multiplier effect is already evident in many ASEAN economies that prioritized connectivity, streamlined the supply chain management, modernized their ports, and established efficient banking and trade systems. They have also embraced the cutting-edge technologies such as AI-driven port management, digital documentation, and advanced maritime domain awareness systems. As today morning, I just returned from Malaysia today, attending a convocation in Netherlands Maritime University at Johor Bahru. Over 350 graduates received their degrees, and this is another avenue of human resource where the potential lies between 6 to 8 billion. This university is a private university, and it was constituted and erected by 3 maritime-related captains, those who was graduated from Pakistan. And you can imagine that the contribution of Malaysian maritime industry into their overall GDP is around 40%. And where do we lie is 1.5%. So we have heard strong calls
for reforming our financial frameworks, improving investors' confidence, and adopting new instruments such as blue bonds and dedicated blue economy funds to mobilize capital for the maritime growth. The creation of a Maritime Chamber of Commerce and Industries is another timely step in this direction, aimed at reinforcing and fostering a stronger climate of trust and investment across the entire spectrum of maritime field. Ministry of Maritime Affairs envisions the comprehensive Blue Economy Framework under the title of Maritime at 100. That is to unlock our $100 billion by 2047 through exploitation of strategic deep sea resources and the advancement of marine renewable energy systems, a vision that reflects Pakistan's long-term commitment to sustainable ocean-based growth. What Pakistan needs the most is, at the top, is the political will and a vision that connects ports to the communities and positions Pakistan as a country, a credible maritime nation. The way forward lies in aligning our maritime economy with the global best practices of supply chain management, building investors' confidence through transparency and pursuing long-term strategies. Similarly, encouraging greater focus on integrating maritime technologies and defense innovation can also play its due role. To realize this, financial mechanism must be modernized, domestic investment expanded, and dedicated resources directed towards the ports, logistic, fisheries, tourism, and coastal developments. This will only happen when the local investors and the business community sees the maritime domain as a high forum frontier. The blue economy is not a peripheral to Pakistan's progress. I must say, rather, it is central theme only if, as a nation, we think and we realize. Thank you very much. Thank you, sir. We request the chief guest to kindly remain on the stage, and I also request Vice Admiral Irfan Ahmed, Hilal-e-Imtiaz Military, Sitara-e-Jurrat, to now give away the souvenirs to our worthy speakers. Mr. Jahzeb Sikandar. Commodore Ehsan Ahmed Khan, Sitara-e-Imtiaz Military. Mr. Jahzeb Sikandar.
Mr. Muhammad Mubashir Hussain. We now request It's 4 p.m.
एक बदर एक्सपो की तरफ से जो है एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है IEEE फेयर का, जिसके अंदर हम लोग अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है शोकेस करते हैं। बदर एक्सपो ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, वो हमें काफ़ी सपोर्ट भी करती है और यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज को भी उसने काफ़ी सपोर्ट किया है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब,
तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। Now tonight at the Pi Gala dinner, we honor the very heart of Pakistan, its vibrant culture, its timeless traditions, and its progressive spirit. साकू ढोल मनावना है, साकू यार मनावना है, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे। ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन, ओ लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सही शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सही शहबाज कलंदर, सही शहबाज कलंदर, बटे दम दम दे अंदर। On behalf of Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, I thank all of you for being here tonight. Professor Noor is recognized as one of Pakistan's most accomplished orthopedic surgeons. He has served as President of the Pakistan Orthopedic Association and actively promotes public awareness on bone health and osteoporosis through nationwide programs. Thank you for joining us today. I would now like to introduce our panelists. Dr. Abid Abbas Sheikh is a medical graduate from DUHS with an MBA in marketing from Newport University. His career spans clinical practice, pharmaceutical leadership, and healthcare consulting as the organizing secretary of Healthcare Expo 2025. Next up, I would like to invite Professor Dr. Syed Hussain Askari, Chief Executive Officer of Fatma Jinnah Dental College and Head of the Department of Community Dentistry with an MSc in Dental Public Health from London and a DDD-PH from the Royal College of Surgeons, England. Dr. Askari has played a pivotal role in shaping dental education and public health initiatives in Pakistan. As President of PAMI, Sindh, and founder of the Academy of Clinical Excellence,
He continues to drive innovation in healthcare leadership and education. Up next, I would like to invite Mr. Bilal Amjad, founder and CEO of Instacare. Instacare is a Lahore-based health tech company revolutionizing healthcare delivery in Pakistan. His expertise in telemedicine, AI, and cloud computing has transformed over 3,500 clinics into smart clinics and enabled nationwide remote consultations. His exceptional contributions have earned him 2 presidential awards and the Commonwealth Award and recognition as Microsoft's most valuable professional since 2016. I would now like to invite Dr. Abdul Salam from Shifa International Hospital, Islamabad, who brings invaluable expertise in remote critical care through telemedicine, helping bridge the gap between patients and advanced medical facilities through technology-driven solutions. And last but not the least, Mr. Akbar Raza, a seasoned health tech and RT professional with over 8 years of experience as head of marketing at DigiTrends. He leads business development, product innovation, and market research across multiple geographies, including Saudi Arabia, Norway, Dubai, and the USA. With a deep focus on digital transformation in healthcare, Mr. Raza is driving impactful solutions that bridge technology and patient-centric innovation across emerging and advanced markets. Thank you all for being here. Thank you very much. This is the second Healthcare Expo, and I'm sure the participants of this conference and the organizers have done a wonderful job. After the first Healthcare Expo, this is the second important, and I can see the enthusiastic participation. Starting this session, which is a very important session, and the host has kindly introduced all the moderator. I'm going to ask few questions, and I will give opportunity to the participant. You can raise your hand and you can actually ask a question to one of the panelists. So just a brief introduction. Healthcare delivery is a responsibility of government. That's a basic thing. Education and healthcare delivery. Unfortunately, I don't need to tell you that the government, whether provincial government or the federal government, have failed miserably in delivering the basic thing, education and healthcare delivery. And if you look at it, what is their priority? What is the budget allocated to healthcare delivery and education? And it will be, obviously, if you know the real figure, it will be very, very demoralizing. And even the low budget that has been allocated, how much is actually used in healthcare delivery in the hospital and coming to the patient is also a very sad story. So this responsibility is taken by charitable organization and private sectors, and now the AI and telemedicine taking the responsibility of providing healthcare to the remote area of different cities and of Pakistan. For you sitting here, the important pillars of healthcare delivery are human resource, whether it be a doctor, whether it be a nurse, whether it be a paramedical or a physiotherapist. All of them play an extremely important role. Number 2 is infrastructure. It could be in the form of clinic, it could be in the form of ICU, operation theater, wards. The third important pillar is pharmaceutical. That yes, you have made a diagnosis, you know what is the problem, whether it be a malaria, whether it be diabetes or hypertension. You need to give treatment, and if pharmaceutical ingredients are not available, accessible to the patient, then this exercise of making diagnosis will be futile. The fourth important pillar is medical device.
And according to WHO, there are 2 million medical devices. So if any of the 4 pillars are absent, healthcare delivery is almost impossible. But then infrastructure is not there. How and this session comes to play that infrastructure is deficient, and to improve to international standard, it will take ages, and we cannot wait for ages for infrastructure to be developed. How can we provide acute emergency care? And this is what this session is all about. So, I'll start my question with the doctor on the panel, Dr. Abdul Salam sir. Dr. Abdul Salam, you've graduated from Dow Medical College. You've had the privilege of doing internal medicine from USA and then a board for emergency medicine. And he decided to come back to Pakistan. And the skill that he has learned there, he's implemented it by joining Shifa International Hospital, developing the accident and emergency department, getting it recognized by the College of Physician and Surgeon, and then promoting this concept across Pakistan, whether it be in trauma center or Aga Khan University Hospital, Liaquat National Hospital. We were just talking to you that chest pain, when a patient have a chest pain, it is very important that he comes to a center and a diagnosis is made, whether it is a heart attack or it's gastritis, because the prognosis of both of them are entirely different. Another aspect, Dr. Abdul Salam, is stroke, जो फालिज कहते हैं. And early diagnosis is very important. And there are many reasons for strokes, and the treatment is entirely different. Dr. Abdul Salam, tell us about the management and diagnosis and what role you have played in this. Okay, Assalamu alaikum everyone. And I'm very glad to be here and talking about telemedicine, which is one of the areas that is developing in Pakistan. And when in the COVID era, we realized the real importance of telemedicine. And I will give you a couple of messages that are very, very important. As Dr. Shahid Noor is one of my senior from Dow and a very revered physician. So plenty of people are inspired by his work. But let me tell you more about telemedicine in just a few minutes. I'll give you a couple of scenarios. One of them is explained by him. A chest pain patient comes to the emergency department. It could be any time of the day, maybe 2 o'clock at night. And one of the junior doctors is working over there, and probably he has never seen a chest pain patient like that before. This is the usual story of Pakistan, and that was the reason that we have asked the CPSP to have emergency medicine as a discipline for training. So this physician at 2 o'clock in the morning, what kind of a resources he can gather at that point in time? So the telemedicine helps at that point in time. He can call his senior who may be like sleeping at his home comfortably, and all he has to do is open up his device, look at the ECG and tell him what is next to be done. And if this patient needs to go to the cath lab, at least those 15, 20, 30 minutes that this physician will take coming from home to the hospital will be saved. This patient will be prepared for the cath lab, and the doctor will arrive on time. This is one of the aspects of telemedicine. So the distance should not be the deciding factor of the fate for that particular patient. The same thing goes for the stroke patients. If the patient is having a paralysis or a stroke, and if he happens to come to the hospital where maybe it's in the middle of the night, or maybe the neurologist has just gone home. Now, how are they going to make the decision about the TPA or things like that that can save this patient's life? That will again, telemedicine will come. So these two instances that I just gave to you would show that the telemedicine has a greater role. And I'm talking about the cities. I'm talking about the cities.
And that's the second message. Telemedicine will make the healthcare cost effective. Although it may seem contrary that you're spending too much money on equipments and on other things, but I'm saying it will make the things cost effective. And the reason for that is that the decisions that would be made by the telemedicine physician somewhere in the distance will save the patient's life. And so it's not going to cost a lot of money through disability or other things, or maybe the patient's dying because of the decision not made in time. So that time saved will be the financial gain for the patient, for the institution, for the country. So this is why I think telemedicine would be a real money saver, patient life saver, and a lot of other things. I would stop over here. I have a lot of other things to do, but to answer your question, that's the thing that we have to work with. Thank you, thank you. There are audience. You know what are early symptom of stroke? Anybody who knows can give me one symptom. Raise your hand. आप खड़ी हो जाएं please और जोर से बोलें. Where? स्ट्रोक तो फालिज की बात कर रहे हैं ना. स्ट्रोक नहीं, स्ट्रोक है फालिज. ठीक है. So early diagnosis is very important. Suspicion is very important. ठीक है ना. Let's move to another panelist, and a very popular panelist. My question will be addressed to Professor Raza Askari, and he is very popular among, Dr. Hussain Askari. Dr. Hussain, please let us know, how can AI ethically integrate into clinical decision making without undermining the clinical autonomy of patient and trust? So how can AI be used ethically, integrating into clinical practice, decision making, without undermining clinical autonomy or patient trust? Patient trust, right. Thank you very much. So this is a very interesting question, and this is a burning issue across the globe. As you know, that AI has taken over the world with a big bang, and it's the buzzword for any industry. However, with this kind of surgence of any technology, especially AI, which is $1 trillion industry, there is a lot of questions, a lot of skeptical people who are asking some difficult question. And this is one of those difficult questions, that when we are implementing AI, will the ethical practices be maintained? The trust of the patient and the doctor relationship, how will that be ensured? And there are some other concerns about the data, which is part of some ethical treatment, that data has become valuable. Just simple data like which patient has what disease and what is the number of the disease and which area has which type of a drug selling in the market. This data has now become valuable. This is the new gold. Data is the new gold. So how can we actually protect our system from this, and how can we ensure ethical practices? So I think it is about time that the doctors wake up and they come out of the shell. They should stop thinking that AI is going to replace our jobs. That is not going to happen. The sooner you embrace AI, you understand its role, the sooner you will come up with policies and protocols, and you will address the ethical issues first. So you have to become, I mean by you, that the doctors and the regulators have to become the people calling the shots. The shots in AI, especially related to healthcare, should not be called by the tech companies. It is the doctors and the dental or the medical fraternity that has to decide what to be implemented, what not to be implemented, what is ethical, where to stop, where not to stop.
So these are the things that we need to wake up to, and we have to realize internationally a lot of laws, new regulation, new laws are coming up. If we talk about Pakistan, like your opening statement was the health budget. So let me tell you that the GDP, and there is some youngsters here. GDP is what your country earns on a total, the total figure of the income of your country. So only 0.8 to 0.9% of the GDP of Pakistan is spent on health, not spent, allocated. If you compare that to the US, it is 17%. If you compare it with UK or most European countries, it is somewhere between 15 to 12% of the GDP. Even a country like Bangladesh has a bigger health budget than Pakistan. So first we have to fix the core issues. How will we train so many doctors who will be well versed and then come to the level where they are actually deciding policies and protocols of how AI should be implemented, right? And I think AI, on the positive side, it has given Pakistan a second chance. ठीक है, पहला chance तो हमने सर खो दिया. जो आपने कहा कि what we have done, we have failed. If the government has failed, that means the people, the population, the voters have also failed. हमने आज जो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए इनको हमने क्या दिया है? टूटी हुई सड़कें दी हैं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है. गाँव के तो छोड़ दें, कराची में भी जो ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं वो प्रॉपरली नहीं कंडक्ट हो पाती हैं. तो हमने इनको क्या दिया है? ठीक है, नाउ द AI, क्योंकि once you are online, the technology that is available, the app that is available in the US and the UK is also available in Pakistan. हर गांव में अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपको सेम टेक्नोलॉजी मिल रही है. आज आप क्या डिसीजन लेते हैं, इनको किस तरह ट्रेन करते हैं, ये जितना बड़ा ये एक्सपो हॉल है इसमें रोजाना 2000 बच्चे आना चाहिए, उनकी AI पे ट्रेनिंग होनी चाहिए. तब आपकी कैपेसिटी बिल्ड होगी, आप एक लेवल पे होंगे जहां आपकी लोग बात सुनेंगे, आप डिसीजन लेने के काबिल होंगे. And this is my message also, and this is my appeal to the people who are here, that at least take AI as a second chance and utilize it well. हमारे ये सारे मसले हल हो सकते हैं AI के through. AI is giving solutions which are cost effective. So this is my message, and sir, ethical issues can be addressed, but we have to become first of all educated, and we have to take the actions, and these problems can be addressed in time. Thank you, Dr. Hussain Askari. So, AI is going to stay, and maybe robotic are going to take over as well. But without human support and guidance, healthcare delivery is not possible. So, I will move on forward, and I'll now communicate with Bilal. Bilal Amjad, you have been instrumental. You are a CEO of Instacare, and you have transformed 3,500 clinic into smart clinic. So tell us that these are established clinic. How can your service and be telemedicine platform be adapted for severe rural and underserved communities without compromising clinical standard and patient safety? Yeah, so thank you so much, and Assalamu alaikum everyone. I'm Bilal Amjad, founder and CEO of Instacare. So before answering your question, I would like to elaborate what Instacare does. So हम लोगों ने healthcare information systems का एक पूरा ecosystem develop किया हुआ है, जो कि pharmacies में भी चलते हैं हमारे solutions, labs में भी, उसके अलावा हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम के प्लेयर्स बनते हैं. हमारा विजन है कि हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें. एंड सर, आई वुड से कि पाकिस्तान बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है. सो हमेशा हर टफ टाइम में इस कंट्री ने रेजिलियंस शो की है, चाहे वो क्रिकेट मैचेस हों, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारे किसी भी किस्म के क्राइसिस हो, ये प्राइवेट सेक्टर इसको कभी नीचे नहीं आने देता. एंड सेम गोज फॉर टुडे नाउ कि अगर हमें पब्लिक सेक्टर्स में, मैं आई टोटली अंडरस्टैंड एंड फील योर पेन कि जो हमारे बजट्स कट डाउन हो रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के, वो इन्वेस्ट करने के अब काबिल नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करें. ऐसे में भी प्राइवेट सेक्टर ने ऐसे ज़बरदस्त कमाल अफोर्डेबल सोल्यूशंस निकाल दी हैं कि देख के प्राउड फील करते हैं हम लोग. एंड हमेशा मेरी दुआ है कि
मैं हमेशा अपनी टॉक्स में कहता हूँ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे वो उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुजरने की मजाल ना हो। एंड इंशाल्लाह दिस यंग जनरेशन विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन द कमिंग टाइम। डॉक्टर हसन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एआई के पास बहुत से सोल्यूशन हैं। सर जिस तरह टेलीमेडिसिन की बात कर रहे थे, और यही वो चीज़ है जो मुझे और भी ज़्यादा इस कैटेगरी में काम करने में इंस्पायर करती है कि आई एम अ टेक्निकल CEO, ग्रेजुएटेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइक 15 years ago, और आई जम्प्ड इनटू अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो कि डॉक्टर्स की इंडस्ट्री कंसीडर की जाती थी। वहाँ पर एक इंजीनियर एंटर हो रहा है। ऐसे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री है जहाँ पर ये टेक के लोग समझते हैं हमारी इंडस्ट्री है, बट इसमें डॉक्टर्स एंटर हो रहे हैं। सो सी द ब्लेंड कि अब जिन्होंने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी इज इन द राइट हैंड, उसके अलावा जिन्होंने एग्जीक्यूट करनी है, अब वो ब्रिज भी बन चुका है क्योंकि इंजीनियर्स वांट टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री एंड डेवलप द सॉल्यूशंस। सो जो मेरी जर्नी थी, जो सर आपके पास स्टैट्स आ रहे हैं 3500 क्लिनिक्स को डिजिटलाइज करने में, एज ऑफ नाउ वी हैव डिजिटलाइज मोर देन 5000 हेल्थ केयर सेटअप्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड बियॉन्ड। टेलीमेडिसिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आई स्टिल रिमेंबर 2017 के अंदर आई वॉज द वन जो टेलीमेडिसिन को पिच करता था, और मेडिकल प्रोफेशनल्स मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हम लोगों को फिजिकल एग्जामिनेशंस की ज़रूरत होती है, और वो टेलीमेडिसिन के थ्रू पॉसिबल नहीं था। कोविड ने हमें बहुत सारे ऐसे लेसन्स दिए जिसने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। सो अब टेलीमेडिसिन एक टॉक ऑफ द टाउन नहीं है सिर्फ, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन के केस में भी हम देख सकते हैं। शिफा इंटरनेशनल ने आई थिंक ई-शिफा लॉन्च किया था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ दैट टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव। हमने कोविड के दौरान फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल्स, लैब्स के लिए टेलीमेडिसिन एनेबल की थी, जिन्होंने जो हेल्थ केयर डिलीवरी थी उसको कंटिन्यूटी प्रोवाइड की। और अभी जहाँ तक बात रह जाती है कि हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं या जहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो है वो रसाई नहीं है, वो स्टिल अभी इस कंट्री के लिए एक चैलेंज है। अगर हम बात करें विलेजेस की, तो इट्स नॉट अबाउट के टेक्नोलॉजी कितनी एक्सेसिबल है, इट्स अबाउट के वहाँ पर ट्रेनिंग कितनी है स्टाफ की। और फिर जो हमारे कुछ इश्यूज इस तरह के हैं कि जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन, अगर उसकी आप डिवीजन देखें तो मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में है, और जो हमारी अर्बन एरियाज़ हैं उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है। बट अगर हेल्थ केयर सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करें तो जो हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं दे आर मोस्टली इन द डेवलप्ड सिटीज़, और वो आपके रूरल एरियाज़ में नहीं है। सो दिस मेक्स एक थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इसमें डिवीजन में, डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी मुश्किल इस वजह से भी आती है कि उन एरियाज़ में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अभी कम हैं। एंड आई थिंक कि अब अगर हम ट्रेनिंग करें नर्सेस की, पैरामेडिक्स की, तो टेलीमेडिसिन की रसाई और भी आसान बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आपकी टेलीमेडिसिन, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हो, तब तक अपना पूरा पोटेंशियल नहीं शो कर सकती जब तक उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो अक्रॉस द कंट्री नहीं होगी। एंड आई थिंक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट की स्टेप्स आ जाते हैं जो कि मुझे लगता है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करना चाह रही है, जिसमें फेडरल IT मिनिस्टर ने कुछ अर्सा पहले वन नेशन वन ID का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि इस्लामाबाद की हद तक दे वांट के हर CNIC का मेडिकल रिकॉर्ड बन जाए। गुड स्टेप, दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस पाकिस्तान, जो कि अभी थोड़ा दूर लग रहा है। सिमिलरली अभी कुछ दिन पहले लाइक वेरी रिसेंटली जो डिजिटल डिवाइसेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया। नाउ द थिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये पोर्टल्स या ये वन नेशन वन ID आपके इकोसिस्टम में किस तरह इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेशन के बाद ये जो हर डॉक्टर के हाथ में एक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड किस तरह पहुंचाया जाता है और वो पेशेंट के लिए कितना एक्सेसिबल होता है। सो आई थिंक कि हम लोगों को ओवरऑल हेल्थ केयर इकोसिस्टम को एक्सेसिबल बनाने की जरूरत है थ्रू टेलीमेडिसिन, थ्रू लिवरेजिंग AI। उसके अलावा लेकिन सबकी फाउंडेशन है आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपकी इंफॉर्मेशन का सेंट्रलाइज एंड डिजिटाइज होना। तो आई थिंक कि इफ गवर्नमेंट इज थिंकिंग लाइक दैट, तो देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो कि यही चीज चाहती हैं, एंड आई थिंक दिस इज राइट टाइम टू कोलैबोरेट। Thank you. I will now concentrate on Akbar Raza, electronic medical record and data privacy. जी, ठीक है ना, and institutional and national boundaries. So एक double edged sword है
कि हम डेटा प्राइवेसी को भी कैसे हम कंट्रोल करें, and availability of this record, whether, for example, I'm Karachi based and I'm traveling to Lahore or Islamabad and something happens and my record is available. तो ये मुझे बताएं कि कैसे हम ये डेटा प्राइवेसी को भी मैनेज कर सकें and interoperability भी कर सकें and इसकी एक्सेस भी हो and maybe international access भी हो सके. Sure. Thank you, Dr. Noor. So myself is Akbar Raza, and I'm the head of marketing at DigiTrends, which is an IT company, but we are mainly working with health tech segment for over 10 years now. I'd like to start off by continuing to what Mr. Hussain has mentioned regarding AI. So just to be very clear, AI is more than ChatGPT, and it's the revolution that is coming, which will be unstoppable for everyone. So हम बात करते हैं कि पाकिस्तान has a very backward mindset. यहाँ पे governance इतनी नहीं है, data privacy नहीं होती, कोई compliances नहीं है. But health tech is one segment that is the most compliant of all the industries that are operating in Pakistan. And with respect to AI, there's this thing called AI governance and AI compliance, जो कि West में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप उस पर पूरा उन्होंने different jobs create कर दी हैं AI governance से related. So उसको utilize करते हुए हम जो है we can use the data and make it governed and make it compliant as per the policies that are available to us in Pakistan. And as Dr. Noor has mentioned, we cannot wait anymore. We cannot wait कि government जो है वो कुछ compliances create करेगी, कुछ policies बनाएगी. We have to do our own actions in order to survive, in order to meet the gaps that are already there. Data को use करके हम AI से, everybody knows कि AI cannot work without the data, and the data privacy is one issue that is very much talked about in the West as well. So हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हम डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस को यूज़ करें, हम AI के जो डेटा है, जितना भी पेशेंट्स का डेटा है, उनको डिवाइसेस तक ही महदूद करें. हम ऐसे कंप्लाइंसेस और ऐसी रेगुलेशंस बना लें जाके आपके जो डेटा प्राइवेसी ब्रीचेस हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकें. और क्योंकि डेटा के बगैर AI वर्क नहीं करेगा, एंड AI इज़ द नेक्स्ट रेवोल्यूशन. तो हमें इसी को लेके चलना है. वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव अबाउट इट, अदरवाइज वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड. जैसे हम पहले कोविड के टाइम पे भी पीछे रह गए थे, हमने वो उन चीज कोविड को यूटिलाइज नहीं किया, अपनी डिजिटल हेल्थ पॉलिसीज भी नहीं बनाई. we used to market telemedicine products. We also used to market different remote patient monitoring related products. Wearables के ऊपर काफी हमने काम किया during COVID, क्योंकि face to face interactions were very limited at that time. But as soon as the things settled, तो वो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं dozed off हो गई. So I think from my side, I would request and suggest कि हमारे जो जैसे डॉक्टर नूर जैसे लोग हैं, बिलाल जैसे लोग हैं, they should come into different roles and try to work on different compliances and regulations that we can implement as one nation in Pakistan, and we can see कि क्या results निकल कर आते हैं उसके. Thank you very much. Dr. Abid, you work in one of the top trauma center in Pakistan. And there's a lot of burden on the trauma center because primary healthcare services for primary minor trauma are not available. And these institutions are overburdened by simple thing, and most complex thing might get neglected. Do you think that telemedicine can be involved or implemented in trauma center? जी, definitely. मगर आपका सवाल का जवाब देने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू यू. यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड. जब आपको बुलाया, जिस वक्त आपको बुलाया, आप अपनी मसरूफियात, आई नो यू आर अ वेरी बिजी ऑर्थोपेडिक सर्जन, मगर अपनी मसरूफियात को एक तरफ रखकर आप हमेशा आए. एंड दिस इज एक्चुअली योर लव फॉर द सब्जेक्ट. तो फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज के वंस अगेन आई मार्वल योर सामान शिफा फाउंडेशन, जिसका आपने जिक्र नहीं किया. मेरे ख्याल में हर गुफ्तगू शुरू करने से पहले उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इट्स सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स डूइंग वंडर्स. हमारे यहाँ हेल्थ डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्ट होती हैं. अ लॉट ऑफ रेवेन्यू वो हम खर्च कर रहे होते हैं उनको इम्पोर्ट करने में. मामूली चीज़ें जो कि सालों गुजर गए, तकरीबन सदी होने वाली है पाकिस्तान को तख्लीक हुए हुए, मगर हमने इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया कि हम किस तरह हेल्थ डिवाइसेस को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके न सिर्फ कॉस्ट
रेवेन्यू सेविंग कर सकते हैं, फॉरेन रिजर्व, बल्कि हम उन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एंड वी कैन अर्न। तो शाहिद नूर साहब की ऑर्गेनाइजेशन सामान्य शिफा, इसके अंदर बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग इनके साथ शामिल हैं, और जब नीयत अच्छी हो तो कुदरत जो है वो साथ देती है, तो बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। और यकीनन मैं चाहूँगा कि इस सेशन के आखिर में आप कम से कम 5 मिनट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर बात कीजिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि अच्छा काम किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ हो रहा है और कहाँ कहाँ वो उसके अंदर शामिल हो सकता है। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, यस आई एम एसोसिएटेड विद ट्रॉमा सेंटर, और ट्रॉमा सेंटर जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा है, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। ये सिविल हॉस्पिटल के साथ है, 15 मंजिला है, 500 बेड इसकी कैपेसिटी है, और यहाँ की मसरूफियत का ये हाल है कि हम हर 2 से 3 मिनट के अंदर एक नया पेशेंट हमारे पास होता है। ठीक है, तो मैं एक बात कहता हूँ कि वी आर इंजरी प्रोन सोसाइटी। हम लोग काम करते हैं तो उस काम के अंदर हम हिफाजत, अपनी ज़ाती हिफाजत को मद्देनज़र नहीं रखते। उसके नतीजे के अंदर ट्रॉमा एंड एक्सीडेंट्स दे आर वेरी मच प्रेवलेंट, वेरी मच कॉमन है। अब ट्रॉमा के बाद जो सबसे अहम चीज होती है वो टाइम होता है, जिस टाइम के अंदर पेशेंट जो है साइट ऑफ एक्सीडेंट से डेफिनेटिव केयर तक पहुंच जाए। वो पीरियड जो है वो सबसे ज्यादा अहम होता है, और उसके अंदर हमारे यहाँ एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। उसमें से अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इनिशिएटिव है, उसने 1112 SIEHS और SERS के जरिए बहुत सारी अच्छी एम्बुलेंसेज और काबिल और ट्रेंड स्टाफ जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। मगर उस ट्रेंड स्टाफ को भी बाज़ मरतबा ये पता नहीं होता है कि उसने मरीज को लिया है और मरीज को जो वो पहुंचा रहा है, तो उसको मरीज के साथ उसे क्या करना है। इसके अंदर टेलीमेडिसिन हैज अ बिग रोल। आई थिंक एवरी एम्बुलेंस सर्विस शुड बी कनेक्टेड विद ट्रॉमा सेंटर थ्रू telemedicine, so that the patient just that they have taken up who was unlucky enough to be part of an accident and trauma, तो उसके बारे में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो थ्रू टेलीमेडिसिन, जो एम्बुलेंस के अंदर ऑपरेटर्स हैं, एम्बुलेंस के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसे गाइड कर दें कि उसे क्या क्या फौरी तौर पर करना है। बाज़ मता तो यहाँ तक होता है कि मरीज को पिक किया, मगर जो ड्राइवर है उसे ये पता नहीं है कि इस मरीज को हमें कौन से इंस्टीट्यूट में लेकर जाना है। तो ये गाइडेंस भी अगर एक सेंट्रलाइज्ड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद हो तो ये एडवाइस मिल सकती है, और उसकी वजह से बहुत सा कीमती वक्त बच सकता है, और उस कीमती वक्त को बचने से बहुत सारे जो मसाइल हैं वो कम हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकती है, जान बचाई जा सकती है, और बाज़ मरतबा आज़ा भी बचाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद, आपने बड़ा आसान अल्फाज में समझाया कि हाउ कैन टेलीमेडिसिन बी इम्पोर्टेंट इन सेविंग लाइफ ऑफ दैट पेशेंट। ठीक है, और ये जो आपने 1122 की जो बात की है, इनके पास पैरामेडिकल के साथ मोटरसाइकिल भी हैं जो कि रिमोट एरिया में भी पहुंच सकते हैं, लाइफ सेविंग मेजर्स कर सकते हैं, एंड देन दे कैन कॉल एम्बुलेंस एंड मेजर हो। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड हो, कराची की सड़कों में एक एम्बुलेंस फंस जाती है, उसको पता नहीं कि किस जगह जाना है, और ड्राइवर को तो ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ जिसकी कम्युनिकेशन हो एंड सेंट्रलाइज हो कि इसको JPMC में लेके जाना है या इसको यहाँ लेके जाना है, जिस शहर में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हो वो चीजें हो जाएं। नवीद प्लीज, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे। अभी आपकी फाइनल रिकमेंडेशन क्या है जो आपने जो प्रॉब्लम देखी है? मुझे एक चीज़ बताइए, आपने यकीनन जब नौजवान थे हम लोग, 25-26 साल के थे जब से अपने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया हम लोगों ने, और आज माशाल्लाह 40-40 साल गुजार दिए। मुझे ये बताएं कि आपकी जो भी लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने कोई टीम तैयार की है क्या? जैसे आप उसके बाद क्या होगा जब हम लोग चले जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, ये सवाल ऐसा है कि अगर हकीकतन जो है मेरे ख्याल में हम आखिरी शायद वो जनरेशन है कि जो इतनी मेहनत और जान फरोशी से अपने जो एरिया है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो पावर प्रोटेक्शन डिवाइसेस का, उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके बाद मुझे
मैं नहीं कह सकता कि इसके बाद इस परचम को कोई आगे लेके चल सकेगा, नहीं चल सकेगा। दुश्वारियाँ इतनी सारी हैं और जो तवील सफ़र है उसके अंदर हमने ये देखा है कि हम तनहा एक किस्म की जिहाद कर रहे होते हैं और लगे होते हैं, समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, लेकिन किसी किस्म का वो माहौल नहीं बन रहा जिसमें कि हम ये समझें कि नहीं हमें वाकई बहुत ज़्यादा कामयाबी। कुछ चीज़ें हमारे एंड पर भी मसाइल होंगे यकीनन। मिसलन मैं समझता हूँ कि शुरू के जो साल थे उन दिनों हमने जिस तेज़ी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स बनाने की कोशिश की, शायद हमें उससे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, और हम उसी के अंदर जिद्दत पैदा करते हैं बजाय इसके कि उसकी जो प्रोडक्ट जो ब्रेड्थ है वो बढ़ाने के बजाय प्रोडक्ट डेप्थ जो है उस पर हम काम करते हैं। वो एक लेसन टू लर्न था कि बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाएं और आपके पास इतने R&D रिसोर्सेज ना हो कि आप उसमें फ्लो बैक कर सकें कि हर एक को उस लेवल पे लेकर आएँ कि या तो वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करे या एक्सपोर्ट करे। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से तो खैर मेरे ख्याल में हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे कि हमने जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट होती थी उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन शायद हम उस लेवल पे उनको नहीं ले जा सके बिकॉज जो हमारी प्रोडक्ट ब्रेड थी वो इतनी थी कि हर एक को हम उस मेयार पर ले जाते कि हम एक्सपोर्ट कर लेते। तो ये तो हमारे अपने एंड की चीज़ें थी, लेकिन मैंने साथ ये कहा कि जो हमारी हुकूमत वक्त होती है या जो उसके मिनिस्ट्रीज और इदारे होते हैं उनको ये इल्म ही नहीं होता कि हमारे मुल्क में क्या बनता है। पहली बात है कि उनके इल्म में ही नहीं है, उनके इदराक में ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने सोलर चार्ज कंट्रोलर बनाया और इंपोर्ट हो रहा है कि सोलर चार्ज कंट्रोलर, पता चला उसके ऊपर ड्यूटीज और टैक्सेस नहीं है, लेकिन मैं जब बेचने जाता हूँ लोकली प्रोड्यूस और उनसे मैं पता कर तो मुझ पर ये लाजिम होता है कि मैं सेल्स टैक्स भी चार्ज करूँ जबकि इंपोर्ट पे नहीं है। अगर पूछा जाए FBR से, और जो हमने पूछा कि भाई ये आप हमसे क्यों तवक्को रखते हैं कि हम सेल्स टैक्स चार्ज करें, इस पे तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे तो कोई सेल्स टैक्स तो ड्यूटी नहीं है। हमें उनका जवाब ये आता है कि जी हमें इल्म ही नहीं कि हमारे मुल्क में ये बन रहा है। और बताने वाला कौन है? इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी कि उनको पता होना चाहिए मुल्क में इंजीनियरिंग गुड्स बनती क्या है, उनके इल्म में ही नहीं है। फिर उसके बाद जब वो आगे FBR को जाके बताएंगे कि भाई ये बनती है, इस पे आप टैक्सेस और ड्यूटीज मत लगाइए या इस पे इतने % लगाइए, ये एक किस्म का डिस्कनेक्ट है। जो हुकूमती इदारे हैं ना और एंटिटीज, उनमें भी डिस्कनेक्ट है। उनको एक तो इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है क्या बनता है हमारे मुल्क में। बता भी दिया जाए तो वो फिर आगे जो रेलिवेंट इदारे हैं उनको नहीं बताते, तो जो पॉलिसी जो बनती है जिस किस्म की भी, वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो वो दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी जो है ना, जब तक नहीं होगी हम अपने लेवल पर करते रहेंगे काम, लेकिन जो इस सारे मुमलिकत को चलाने वाले इदारे हैं उनको इल्म ही नहीं होगा हो क्या रहा है, और उस हवाले से वो कुछ करेंगे नहीं, तो हम कब तक ये जंग लड़ते रहेंगे। हाँ, कभी कामयाबी होगी, कभी नाकामी होगी, तो ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। तो नवीद, इसका मतलब ये हुआ दो बातें, दो ऑप्शन है आज की जो गुफ्तगू है। अभी मैं खालिद साहब से भी बात करूंगा, मुझे सिर्फ ये बताएंगे दो ऑप्शन है, या तो हम ये जो बातें कर रहे हैं ये नशिस्तम, गुफ्तम, बर्खास्तम, इसके बाद कोई उसका एंड रिजल्ट कोई भी नहीं होगा किसी किस्म का, या एटलीस्ट देखें, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि मैंने देखा है कुछ एक इलाके में गया तो वहाँ की सड़कें टूटी थी चारों तरफ की, लेकिन कुछ अंदर की गलियां बड़ी साफ सुथरी, वेल मेंटेन्ड, और पता नहीं क्या कर लिया था। तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ कंसल्टेंट बैठे हुए हैं वो कम अज़ कम कुछ कमिट करें, हम अब सेल्फ कमिटमेंट करें। इस वक्त 4-5 कंसल्टेंट में नज़र आ रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्ट, पाकिस्तानी प्रोडक्ट लेके आता है तो हम उनको हेल्प करें। अगर उसमें कुछ कमी है तो ऐसी चीज़ें सजेस्ट करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, 2005 में, बल्कि यहाँ पर कासिम बैठे हुए, पर 2005 में हमने एक नई अर्थिंग का एक नई टेक्नोलॉजी समझने इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें हम खड्डा खोद के बड़ा सा और उसमें नमक, हल्दी, चूना, मिर्चें मिला के कॉपर प्लेट डाला करते थे, जो हमने कभी नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो वो नई टेक्नोलॉजी क्या चीज़ थी कि वो जो हीरोइन की जो है ना वो रॉड, अर्थिंग रॉड बाहर नजर आई, किसी को वो उखाड़ के ले जाया करते थे। तो एक वेंडाल प्रूफ टाइप का एक नई टेक्नोलॉजी थी। अब वो जो केमिकल समझ लें या जो भी कंपाउंड समझ लें जो कि उसमें डाला जाता था, तो कुछ कंसल्टेंट ने उनसे कहा कि इसके इंग्रेडिएंट क्या है, पहले ये बताओ।
तो हम लोगों को ऐसे सवाल करने नहीं चाहिए। अगर वो चीज़ हमें रिजल्ट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हमें उसको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए या उसको गाइड ज़रूर करना चाहिए कि तुम ये करो, तुम्हारी प्रोजेक्ट आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर मैं ये बात सही कह रहा हूँ तो प्लीज़ जो है ना, जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं कंसल्टेंट्स, उनको ये चाहिए कि जो भी लोकल प्रोडक्ट आप जो है ना वो डेवलप करता है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। कम से कम हम अपने एरिया में तो सफाई कर लें यार। हमें मालूम है कि हम जो कुछ भी यहाँ से रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो जो 10-20 साल से कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं, आज कभी भी नहीं निकलेगा। खालिद साहब प्लीज मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन था बात कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सवाल तो नहीं है, मेरा कमेंट है। देखिए, हमें आपने जो बातें की हैं, इनसे सवालात किए हैं कि ये आगे क्यों नहीं बढ़े, चैलेंजेस क्या थे, सब कुछ था। इस पे हमारी बातचीत बहुत होती रही है और सब चलता रहा। मेरा ख्याल है हमें ये देखना होगा कि जिन कौमों ने तरक्की की है वो कैसे की है। ठीक है, चाइना ने अगर तरक्की की है, किसी और मुल्क ने जो तरक्की की है, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या थी। ठीक है, अगर सब जगह इसको सारी ही जगहों का ये मवाजना किया जाए, इस पर सोचा जाए, तो एक चीज़ मिलेगी आपको, और वो होगी पॉलिटिकल विल। कि देयर वाज ए बोल्ड पॉलिटिकल डिसीजन, प्लान फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एंड दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स। बाकी सारी चीज़ें उसके अंडर में आ जाती हैं। ये ड्यूटीज़ की बात आप कर रहे हैं, टैक्सेस की बात कर रहे हैं, सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर लें, कुछ भी बात कर लें, वो सारा कुछ इसी अम्ब्रेला के अंडर में आ जाता है कि आपकी पॉलिटिकल विल क्या है। मैं आपको इस वक्त कम से कम 5 मिसालें दे सकता हूँ जिनसे ये साबित होगा कि पाकिस्तान सन 60 में जिस लेवल के ऊपर था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से और इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिहाज से, वो मेरे ख्याल है सन 70 तक पहुँचते ख़त्म हो चुका था। बहुत सारी मिसालें, कम से कम 5 मिसालें मैं आपके सामने दे सकता हूँ, बड़ी मिसालें। और अगर वो उसी नहज पे पाकिस्तान चलता रहता तो हम यकीनन बहुत आगे होते आज। उसके पीछे क्या था, हम जहाँ थे अर्ली 60s में कह लीजिए, या लेट 50s में, या अर्ली 60s ज़्यादा बेहतर है, उसके पीछे एक पॉलिटिकल विल थी। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो लीडरशिप आ गई, मैं बड़े खुल कर कह सकता हूँ, जनरल ज़ियाउल हक और उसके बाद नवाज शरीफ, इन्होंने कहा कि हमें लोकल डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें इंपोर्ट करना है। पाकिस्तान में, लाहौर में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स बनते थे। उन्होंने कहा ये क्या मसला है, क्या ज़रूरत है इसकी, बाहर से इंपोर्ट करो। बाहर से इंपोर्टेशन शुरू हो गई। ठीक है, और इसी तरीके की मैं बहुत सारी मिसालें आपको, कम से कम 5 मिसालें और मैं दे सकता। तो इट वाज द पॉलिटिकल विल which was behind our growth, and it is the political will which has been responsible for our this decline. And हमारी जो कोशिश होनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, IEEE के प्लेटफॉर्म से, वो वही होनी चाहिए कि हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को जगाएं। अगर कोशिश हो सकती है सिर्फ इसलिए कि हमें पता है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस क्या हैं, उनको कौन ड्राइव कर रहा है और क्या हैसियत है उनकी, ये सब कुछ मालूम है। लेकिन जिसको कहते हैं कि अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाना, तो ये एक कोशिश हो सकती है और इसी तरफ हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं जी टोटली एग्री करता हूँ खालिद साहब के साथ, बिकॉज वी शुड लुक अराउंड आवर नेबर्स, not look around towards Germany or USA. तो बड़ा foolish लगती है हम, they are way ahead. हमारा जो नेबर है इंडिया, हमारा जो नेबर है इंडिया, और हम देखिए यार वो हमसे आगे क्यों चला गया और हम क्यों पीछे रह गए। तो बेसिकली उन्होंने 47 से लेके 1991 तक उन्होंने इम्पोर्ट बैन की हुई थी।
उनकी अपनी इंडस्ट्री डेवलप होती है। और आप सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आप सबको पता है शुरू में आपने बहुत गलतियां की होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुए होंगे, तो उसके बाद जाके ठीक हो गया। हमारे यहाँ कोई हमारा जो मकसद है मेक इन पाकिस्तान is not to look at they have exposed the weaknesses or the problems. It's 5 p.m. Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Guest, Minister of Maritime Affairs, Muhammad Junaid Anwar Chaudhry, has arrived. Ladies and gentlemen, can I please request all of you to please rise for the national anthem of Islamic Republic of Pakistan. Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. I would like to request my team to please play the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from Satan the accursed. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. And it is He who subjected the sea, for you to eat from it tender meat, and to extract from it ornaments which you wear. And you see the ships billowing through it, and He subjected it, that you may seek His bounty, and perhaps you will be grateful. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Subhanallah. Honorable Chief Guest, Minister of Maritime Affairs Mohammad Junaid Anwar Chaudhry, Vice Admiral Raja Rab Nawaz, Hilal Imtiaz Military, Sitare Bisalat, Chief of Staff, Vice Admiral Muhammad Faisal Abbasi, Hilal Imtiaz Military Commander Karachi, Mr. Zuhair Nasir, the CEO of Badar Expo, respected delegates, exhibitors, excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I, Sara Baloch, on behalf of the PIMEC 2025, would like to welcome you all to the closing ceremony of second edition of Pakistan International Maritime Expo and Conference 2025. What a wonderfully organized event it has been. Truly indeed a matter of great pleasure to see the PIMEC gaining prominence among the global maritime exhibitions. It is indeed heartening to have witnessed overwhelming participation from all the maritime sectors during PIMEC 2025. We're extremely thankful to our local and foreign guests, exhibitors, worthy speakers, and delegates for their heartfelt participation and making this event a great success. PIMEC 2025 has been an ideal platform for maritime sectors to access the best knowledge, products, and technology available to cater for respective requirements. Ladies and gentlemen, I would like to invite Vice Admiral Muhammad Faisal Abbasi, Hilal Imtiaz Military Commander Karachi, for summing up of the PIMEC 2025 exhibition. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. Muhammad Junaid Anwar Chaudhry, Honorable Federal Minister for Maritime Affairs, Vice Admiral Raja Rab Nawaz, Hilal Imtiaz Military, Satare Basalat, Chief of Staff, Excellencies from Diplomatic Corps, international delegates, senior military officers from friendly countries, industry partners, representatives of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh and a very good morning. It is my honor and great pleasure to welcome you all at the closing ceremony of Pakistan International Maritime Exhibition and Conference 2025 and present a brief conclusion on outcomes of the second edition of PIMEC. This flagship initiative of Pakistan Navy, held under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, was envisioned to accelerate the growth of Pakistan's maritime sector and to unlock the immense potential of our blue economy for national prosperity. Over the past 4 days, PIMEC 2025 has brought together policymakers, industry leaders, researchers, and maritime professionals from across the globe, united by shared commitment of cooperation, innovation, and sustainable development. Before proceeding, I record my profound gratitude to the Ministry of Maritime Affairs, other federal departments, Government of Sindh, Pakistan Navy, military and civil law enforcement agencies, National Institute of Maritime Affairs, Badar Expo Solutions for their tireless efforts and seamless support for making this exhibition a great success. We take immense pride in leading this national effort, an event that reflects the resilience and forward-looking spirit of Pakistan's maritime community. More than an exhibition, PIMEC 2025 has provided a platform for economic progress, testament to how our vision, technological advancements, and collaboration opportunities can define a sustainable maritime future for all of us. Distinguished guests, PIMEC 2025 has served as a milestone in Pakistan's maritime journey. The exhibition featured 4 key clusters:
shipbuilding, repair and marine engineering, port infrastructure, logistics and green port solutions, offshore and marine energy exploration, fisheries, aquaculture, marine biotechnology and digitalization, maritime defense security technologies, and human resource development in maritime domain. These clusters transform an engagement from display into genuine business collaboration, generating opportunities for joint ventures, contracts, and MOUs. This year's participation was truly global, with delegates from 44 countries, including 28 foreign and 150 national exhibitors, reflecting the growing international interest in Pakistan's maritime potential. We witnessed strategic partnerships